कैसा भी कमाल हो भाई, कमाल हो। हम लोग को भी कैरी करो। हम्म? हम्म। क्यों, तुम लड़कियां तो हो ना, कंधे से कंधा मिलाना है। तो एक जगह लड़का लड़का अगर नीचे हो रहा है तो क्या दिक्कत है? इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? मिलाओ कंधे से कंधा। कैसा भी You must have a whole bunch of वो तो questions चल रहा है after our मेरा ना। last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your brother... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. ये इसके अलावा भी और बहुत बहुत काम है। चार साल में ज्यादा कमाएगी थी। ठीक है, कमाल। तू आगे जा, तेरे पीछे हम हैं, टेंशन मत ले। आओ। Of dice, cats and cards. Once, there was a glorious kingdom. I don't wanna listen that fucking glorious kingdom. तो बैटल पास के स्किन नहीं चेंज करते, चूते रहो। ये
Itu. फ्रीडम मिल रहा है। एक्सपोनेंस चल रहा है क्या? टू एक्सपोनेंस चल रहा है मेरे को। More speed. Let's light it up! Oh, reveal thyself! Order guide you. Your mom. More speed. पहले कमीशन फिर ट्रायल। ठीक है। फिर क्वेस्ट खेलेंगे फिर। Stabilize. हाँ ठीक है ठीक है। I will have order. No rest for the wicked. Going in! Shudder! More speed.
जगह आग लगा रही है लोग। Gather! Order guide you. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! By royal decree. As you wish, main Fräulein. Vengeance will be mine! Solidify! Huh? Let's light it up! Huh? Gather! Oz, reveal thyself. Quake! Beg for mercy! Crush! Let's light it up! Huh? Let's light it up! Midnight Phantasmagoria. Stabilize! Beg for mercy! By royal decree. Off we go! Gather! Crush! Let's light it up! Oz, reveal thyself. Beg for mercy! ये टाइम पास तो है। Rack and ruin!
more speed. इकडे बघायला ते राव आहे. Ad Astra Abyssosk. Thank you for complete. Ad Astra Abyssosk. Imshal. Try something new at the Ramen restaurant. मुझे अपना फिश चाहिए ना. Cheap and tasty chop suey. मीशो से बनाने से कुछ फायदा ही नहीं है.
ये तो हो जाएगा। चलो अभी फॉर्जिंग के लिए चलो फॉर्जिंग। राहिला ना ह्यावेळेस केले असते अजून थोडंसं ते आणलं असतं सामान तर काय बोलत नाही हो तू तुला विचार पण थांब तुझा पगार येते ते पण विचार मी इथे नाही म्हणून मी औरंगाबाद मधून विचार मम्मीने सांगितलं होतं तुम्हाला फोन करून विचारायला आता मी जरा फ्री आहे म्हणून विचारतो तुम्हाला मम्मीला पाठवायला असं असं बोललो म्हणजे ते पण नाही वेळ दिले असतात ना पण मम्मीचा ऍक्सिडेंट झाल्यावर तुम्हाला खर्च पण घातला थोडा बोलायचं असं बोलायचं कामावर नाही बोलतो काय करायचं आता जेवायला खिचडी भात आमची ना डाळ मी संपले होते बाबा बताओ को क्या लगता है? मला मुलाची डाळ किती बघायला लागेल मोठी वस्तू डाळ पण झाली आहे Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Ascension materials. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? मेरे बैग में कितना है वो जूली इंजर्ड तेरा
Stabilize. I will have order. Let's light it up! Going in! By royal decree, Shadow Raven, let night fall! Shudder! Flood of frost! Eye for an eye! Oz, reveal thyself! More speed. This is order. Beg for mercy. Let's light it up! By royal decree, rack and ruin. Crush! As you wish, Maidfoot. This realm is no home for a princess. Gather. डैमेज क्यों नहीं हुआ था? Eye for an eye. डैमेज नहीं हुआ था भाई। अच्छा, बस काम नहीं किया क्या? प्रीमोस ऐसा भी जम के टाइप का। कितना लगता है? 46 में वेट वेट करेंगे उताओ।
Silk flower 127 कैसा है? Shimmering nectar. Shimmering nectar. Steam. ऊपर फ्लावर को भी मांगना पड़ेगा चंपा। ट्यूसडे फ्राइडे संडे है ना? टीचिंग ऑफ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए ना? जेमस्टोन हाँ जी वो तो है ही भाई। Solidify. Order guide you. Teamwork is dreamwork! Oz, reveal thy... Beg for mercy. Vengeance will be mine. Crush! I condemn you! Stabilize.
Rack and ruin. Gather. Beg for mercy. Solidify. This is order. भांडेवाली नाही आपल्याला हाताला लागतं कोण सांगितलंय ते Chivalry will never die. Time to scout. Stabilize. Rain outlines your fate. Crush! Freeze to the core! Beg for mercy. उसके पास है चम्मच का लगा
You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. हेलो हेलो क्या वे वूट एक वूट Knights and aristocrats share the same cultural heritage, गधे but the knights had enough sense to do away with all the superfluous details. गारपणाने आंघोळ केली का बघू त्या दिवशी केस घेता काय होतं आजकल शेरिफ नहीं चलती पता है Solidify! आजकल कहीं नहीं भाई No, my sword! Time to act. Rain cutter! More speed. Shudder! Yeah. Stabilize! By royal decree, I summon thee! More speed. Crush! I condemn you! Gather! No, my sword! Rack and ruin! More speed. Solidify! Eye for an eye. ये अबे अचीवमेंट खुला क्या ए अभी इसको मारा भी नहीं था भाई क्या बे क्या रे क्या बज रहा है तू तेरे को क्या होगा सर्दी हो गया क्या बहुत हैं नाक में से लिया गले में से बाहर निकाला गले में से लिया नाक में से बाहर सर्दी हो गई अब रोज को भी सर्दी हुआ था भाई तो सर्दी हुआ उसका क्या हुआ तेरे को भी सर्दी हुआ ना क्या होगा तेरा अब क्यों रे अभी तेरा क्या होगा मेरा कुछ नहीं हुआ नहीं भाई खबरों को भी सर्दी हुआ था होने देना भाई तेरे को भी सर्दी हुआ भाई अब रोज तो चल बसे तुम भी तू भी मरने वाला है भाई
मेरा वन टैप हकबूस हो गया हकबूस तुला विचार करायला लागेल. Gather! I will have order. Witness the power. Oz, reveal thyself. Midnight Phantasmagoria. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Rack and ruin. Solidify! Rain out. Find your fate. Rain cutter. By royal decree. Eye for an eye. Stabilize! Order guide you! Oz, reveal thyself. Rack and ruin. तेरा एक ही लगता है क्या क्या बोल रहा? हेलो, हाँ क्या बोला? देखो नहीं बोला अगं तिच्या आधीच माझ्याकडे 2000 मागत होती बरं टाकते आम्ही तरी कुठून देऊ टाकते सांग बरं पैसे घ्यायला तू सांग माझा एवढा ऍक्सिडेंट झाला मी काय करतो काय नाही माझ्या जीवाला तरी पण मी कामाला जातो बघ का तर पोरांवर भार नको ना जास्त यांना काय यांना घरात बसून काय बोलून काय लाईट बिल मधु मामा गेला होता हाँ भाई धोखा भाई अबे नहीं 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 डीएम है हाँ लेट्स गो चांगलं लागलं त्यांचा भ्रम असा झाला की बाबांचं डेट सर्टिफिकेट जर दाखवलं तर ती लोक तिथे बांधकाम चालू करतात ना बिल्डिंग बांधतात ना त्यांची जागा मोठी आहे ना ती चाळीतली मागची पुढची समोर इकडे 4 खोल्या वरती 4 खोल्या बिझी रहेगा वरना रिप्लाई तो कर देता है बॉट भरपूर मोठा एरिया ना त्यांचा जवळजवळ 4-5 एकर 4-5 गुंठ्याच्या वरती आहे ना ते संडासापर्यंत लास्ट पर्यंत हा मग त्यांना असं वाटलं हे बाबांचं सर्टिफिकेट घेतील मी उभे राहतील हो आता तू सांग तेव्हा नाही उभे राहिले हवन पे रेना आणि आता कशाला उभं राहू अरे यार पेड़ ले रहा है So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, oh, it let out a stench that could wake the dead.
If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first to see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus, so gross! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Yeah, we've been hearing about this game all over the place. This is the first time we've ever actually seen any of the cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Why is that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Okay, fine. I'm not curious and would like to give it a try. Please? Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. Trying to learn the rules can be intimidating. Understood. Traveler, Paimon, to be honest, hearing Timaeus talking about the game has also... Well, what are we waiting for?
मेरा नहीं देखा गया तो क्रॉसर मेरा तो हग्गू हो गया भाई डायमंड गया ना मैं जब से तब से हग्गू हुआ है मेरे साथ तिला पटत नाही ग तिला असं वाटतं आईची पेन्शन आहे माझ्याकडे अगं घेऊन जा तू आईला मी सुखी होईल खरंच काकी कारण आज तू नहीं आ सकता मैं क्रिम्सन बिच तुम्ही तर घरात आहे तुम्ही काही हरकत नाही ना तिचं करायला घरात असणार आहे अगं एवढा माणूस काय कंगाल असतो का काय ओ मैं एस करने लायक दिख रहा हूँ क्या भाई सेंटिनल के एस थोड़ी ना करूँगा अगं जरा पण तू आणि तू तुझ्याकडे पैसा असेल तर तू नुसता रिक्षावाली उडवते वो लोग आरएनजी कर रहे जरा भाई चाल ना आपण नाही चालतो आपण त्या रिक्षाने धावतो अगं पण हिला पैसा उडवायची सवय आहे. अरे सुन आज पेड तू सांग इधर दादा प्रॉलर डाल ती लोकांकडनं शॉर्ट्स पैसे में प्रॉलर डाल उडवायचे अपना माहितीये? ठीक तर और कोणाला सांगायचं? यहाँ पे जो बॉक्सेस है ना उसके ऊपर खड़े होकर साइड में आता रिवील मी डाल म्हणत नाही पण तू खोटं बोलून पैसे घेऊन तू घरात एक रुपया खर्च नाही केला. लॉन्ग है सुबह यहाँ खड़े होकर प्रॉलर डाल दे साइड पे तेच होतं ना हे असलं की उधळतात आणि नंतर मग हरे राम हरे कृष्ण बोलत राहतात. रुक जा होल्ड कर तरी बघ ना एवढं 22,000 म्हटल्यावर कमी आहे का काकी अगं किती खाणार खाऊन खाऊन माणूस जाऊ दे मग आता जाऊ दे शेवटचे काही दिवसांनी मला असं वाटतं तिला ते रूम पण नाही मिळायचा तिथून पण हाकलायला लागेल नाइस रिवील सिटी मग तरी पण तिला जाण नाही त्याची राहणार नाही पण तिला टेंशन मत ले वॉल अच्छी किया मैंने भाई ये जीजी गाइस जीजी जाऊ दे आता त्याला म्हणो ये सरळ माझ्यामध्ये राहा आणि माझ्यामध्ये राहा त्या लोकांना राहू दे तसे जाऊ दे अरे पर वो सीवर से रहता सीवर से आराम से अंदर आ जाता और उस टाइम कुछ कर भी नहीं पाता ना साइट क्लियर नहीं था ब्रो कैसे डालता मैं सिटी में जाऊ दे बघ आता ताई कसा फोन करते मेरे को अगर हेवन से कवर नहीं जाता ना तो वो राउंड अपना था हा अगं हा नंबर तू हा पिक्स निकाल के खेलो यार पिक्स से खेलो ऐसे नहीं बनेगा वरना कल्पेशचा सेव्ह करून ठेव फक्त कोणाला तरी सांग हा आणि मग कल्पेशला सांगितलंस ना तरी मला कळेल फिनिक्स पीछा हक दिया मैंने अरे फिनिक्स को बॉडी लगा था 120 सोवा मिस्त्री सोवा लो है लिंक ए लिंक रुक जा एक सेकंड अरे यार कैसे हक दिया हाँ क्या बोल क्रिम्सन का सैंड है मेन स्टैट एनर्जी रिचार्ज है सब स्टैट में डैमेज है 80 के परसेंटेज क्या क्या मेन क्या है एनर्जी रिचार्ज सैंड्स किस पे लगा रहा है भूताओ के लिए रे भूताओ के लिए ग्राइंड कर रहा है हाँ तो कैसे भाई वो तो कब से कर रहा था करो करो ग्राइंड करो पीस लॉक करो या छोड़ दूँ नहीं 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 देख उसका सुन मैं बता रहा हूँ हाँ बोलना तेरा फ्लावर और प्लूम तो तेरा वो रहेगा HP और 80 के रहेगा ठीक तेरे को सैंड्स रखना है इसका 80 के का नहीं HP परसेंटेज का रखना तेरे को सैंड्स ठीक है अच्छा सैंड्स HP परसेंटेज रहेगा तेरा ठीक और तेरा वो सैंड्स के बाद क्या आता है गॉबलेट
हाँ गॉबलेट तेरा रहेगा पायरो डैमेज का, ठीक। अच्छा गॉबलेट तेरा रहेगा पायरो डैमेज का और लास्ट वाला रहेगा तेरा क्रिट डैमेज का। वो हैट सर्कलेट लॉन्ग है। जिसके पास गन नहीं है, कहाँ है तू? गन थी तेरे पे? सीवर से चल। अरे कवर भाई, वॉल नहीं करूँ क्या यार? अरे नाइस यार, सोवा लो है। ओमेन मत खेलिए, ऑफ है। वॉल कर ले सीधी। ओमेन तेरे पास आ रहा है, आराम से खेल, आराम से खेल। ऑफ है भाई, कुछ भी आर्ट क्यों? कवर पे रहना था तो। भाई थ्रो कर दिया। अरे तो तेरे को पीछे रहना था, अरेना पे स्विंग क्यों लिया तूने? पुलिस जाओ नीचे, जाओ जाओ। सिटी अभी लगा तुम्हें 4171 काय रे? 130 है सोवा भाई। हवर्स नाइस। कमी का देखा युवर हवर्स कमी हगना मत। भागो। अरे हेलो, मर गया भाई तू। ओ भाई कैलकुलेटेड प्लान दिया था मैंने ताकि तू मरे ना भाई, सीवर से भागे तो। समझ रहा है? नीचे ड्रॉप। क्यों, क्या हो गया? रीस्टार्ट कर लेना। एचपी नहीं यार भाई। गार्डियन मेन कर लूँ क्या भाई यार? ग्रेट ग्रेट। हाँ आओ। हेलो हेलो। कवर दो यार मुझे। डोळे सगळे सुटलेत सगळे तर देण्यात चालू तुझी हे कमी झाली बाबा डोळ्याची सुई इच्छी
जरा हील ले जल्दी आ, हील ले, मर जाएगा तू। भाई एस्ट्रा का किल किसने चोरी किया? ऑफ फेक दो के ऑफ, हाँ सेट चला रहा है 80% है ना। मैं फुल कैरी कर रहा हूँ भाई, किल से भी असिस्ट से भी। जेट बाय दे। थैंक यू। जेट स्पीक ले। करना अल्टी करके साइड साइड से कॉल्स ले। यहाँ पे कर, यहाँ पे, यहाँ अरे साइड हो, हाँ जा अल्टी कर। मैं बॉडी देख रहा हूँ तेरी, देख कौन कहाँ कहाँ पे, ये देख ले बस। कवर कवर, वॉल टूटी है। अरे क्या भाई, साइड का कवर यार, प्लांटेड हूँ मैंने। आरएनजी तो है भाई। टॉवेल क्या अपने ओवन ने रिपोर्ट करो। अच्छा जा रहा है पीछे भाई ओवन 150 ये ले। भाई ये बोलेगा 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 डब्लू दबा के रखो और गन गन दबा के रखो भाई। डब्लू दबा के रखो, क्लिक दबा के रखो, 20 रुपए ले लेगा भाई बंदा। अरे यार ये ऊपर बैठा है बीप के, बी से चेम्बर आएगा। ट्रॉलर डाल दे सब। नाइस। अरे पीछे क्यों जा रहे हो अल्टी करके? साइड क्लियर करो, सबकी लोकेशन पता है भाई। ये ओवेन स्पाइक ले ले, टीपी कर ले। भाई ये एस करो फेड। मैंने फेड से एस किया, तू क्यों नहीं कर सकता भाई? डिसमिस कर। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, मैं बता रहा हूँ। प्लान कर रहे वो 111 उसको क्रिकेट दिया। हाँ भाई के भाई बोला बहुत अच्छा कॉल दिया भाई, मेरे को नहीं खेलना।
Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Welcome. How can I help you? Fresh fruit, only at Quinn's Fruit. हेलो हाँ ओह ओ हाँ भाई बाथरूम में भाई एक कस्टम डीएम भाई बेओ सुन ले सुल्तान ए सुल्तान सुन भाई चिल करके खेलो थोड़ा सा तुम बहुत पैनिक कर रहे हो 2 दिन से पैनिक कर रहे हो तुम बहुत 2 दिन से भाई अबे नहीं तू मतलब अबे पहले अपन एकदम चिल करके खेलते थे ना वैसा खेलना भाई तू वो कर रहा मतलब नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला बस बता रहा हूँ भाई Rain outlines your जैसे fate. अभी ना अपन By 2 दिन royal से decree. खेल रहे हो As you wish, sweet Fräulein. समझ रहा Shudder! हाँ Flood of मैं बोल रहा हूँ frost. कि ना अपन जैसे पहले चिल करके खेलते थे ना वैसे खेलो भाई I condemn you! 214 की Gather! I will have order. No, my sword! Let me read you a verse. Crush! Solidify! Rain outlines your fate. Shudder! Yeah! Eye for an eye. More speed. टेम्पर भाई घर बसा ले भाई ऐसे कॉम्पी में क्यों नहीं खेलता रे सोटू जुल्तान कहाँ गया जुल्तान ज़लाटैन ज़लाटैन कहाँ गया भाई ये फोन घेतला तर थोडा तो वाकडा ज़लाटैन आली नाही का बोलतो फोन कहाँ हकता है भाई 4 लीटर कॉफी पी लेगा और फिर बाथरूम में बैठा रहता है काय आलं तुला आता काय पाहिजे आता मला लॅपटॉप पाहिजे आता मी मागत राहणार
पण मला लागतच प्यायला. नाही दादू, तुम्ही जर तुमची हाऊस ये करता काम तर कर मी रहा माझी रहेगा का भाई करू? कहीं मेरे को भी पता है काम डेअरीवर करेगा Aristocratic etiquette is all just वो for वैसे ही show. करेगा भाई Just अचानक से आ smile जाएगा and जैसे nod हम along. मारने जाएंगे I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them अबे that seriously. मेरे को पता है तू वहां पे है मैंने तेरे को बख्शा भाई हाँ नाइफ कर दिया भाई अबे सही में नहीं पता बोला सगळं संपलं. ठीक है भाई वाइट स्विंग क्या हो गया भाई You want to learn some Favonia's blade work? Zlatan. All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Zlatan. एमबॉट लगाने गया था लगता है हेलो ओबी कैंपर छी भाई घर बसा ले वहीं पे हाँ भाई ज्यादा कॉफी पी ली भाई फ्रैपेचिनो भाई फ्रैपेचिनो मैंने देख जो ग्रुप पे डाला ना वो वाली कॉफी पी भाई फुल एनर्जी आएगी हा, झोप नाही येत. असा विचार करते मी दुपारी झोपायचं नाही. एखादं पडलं का डुलकी लागते. ये देखो भाई बंदा वन टैप्स मार रहा भाई कॉम्पी में हकता रहता है शरीर आहे, मशीन आहे. धूल साफ करते रहता है भाई लीडर बोर्ड के नीचे की धूल साफ करता है भाई ये बंदा इधर कस्टम में तो इतना मारेगा भाई ये सगळे हात पाय हलतच राहतात माझे. झोपेत पडेल. टच भी था भाई मैं अभी मैं गार्डियन निकालूं क्या फिर हट बे कैंपर कहीं का भाई खेले भाई फैंटम डे मतलब आरएनजी करोगे आ भाई रुकना मैं कर दूं हट बे तेरा हेड दिख रहा था मैं तेरे को ऐसे भी मार सकता था ठीक है मम्मी इथं डोकं केलं असतं बरं झालं. आवाज येईल. आवाज बारीक कर. कैसे मार रहा है भाई एम बॉट ऑन किया हट बे चलाओ फैंटम आज ओडिन डे भाई ओडिन डे आज ओडिन डे भाई ओडिन डे आज गाइस गाइस ओडिन डे आज साइड से मारता है भाई Rack and ruin. वो तो ओडिन से वन टैप करूंगा मैं रुक जाओ We have put in much work of late.
हेड क्यों नहीं लगा तेरे को? क्या हेड मारा भाई, स्पैम नहीं किया मैंने। हेड पे को तुम लोगों को थोड़ा सा मारना पड़ेगा। हेड पे कैंपर शिफ्ट फ्रॉक का है। भाई तू वो सब छोड़, तू अगर ऐसा कॉम्पी में खेलेगा ना तो तेरे को मैं स्किम दिलाऊंगा भाई। हट पे If बंदे you को ever पता था have लो any मैं। questions about अबे क्राउचर भाई 130 दिया, मार उसको। हटा। अभी देखना कॉम्पी में जाके हग्गू दिखेगा तुझे। हट बे। ओवर कॉन्फिडेंस तो है भाई। पेंटम को क्या हो गया बे तेरे? अबे कॉक हो गई थी कन। मारा भाई। अरे यार पिक नहीं दिया बॉट भाई। मार्केट में सो गया भाई बिस्तर बिस्तर लगा के। हाँ नहीं तो ये देखना अभी भाई। हाँ बोल बोल। ना हाँ हाँ ले ले। बस मेरे को एक बार मैसेज डाल दियो कि खेल रहा तू, क्योंकि वो अकाउंट और लोगों के पास भी है। ठीक है भाई। ट्रॉल भाई ट्रॉल। पीछे से आ गया बेशरम भाई। हट बे। ये पीछे से नहीं आया रहता ना, शिनचैन वन टैप खाता मेरे हाथ से भाई। अभी देखना अभी कॉम्पी में जाके तेरे को दिखेगा कितना अच्छा मार रहा है। क्या पता। काम कर गया, लेट्स गो।
मेरे ऊपर से तुम मेरे ऊपर मेरी ट्राई करेगा तूने हैं? इतना हो गया कदा मेरे ट्राई कर रहा था बहुत भाई। अबे रुक जा, मेरा FPS मीटर वगैरह सब बंद है भाई। एडवेंचर। अबे ग्रूट, पता है क्या हुआ आज? मैं लॉग इन किया ना, तू खेला क्या मेरे अकाउंट से? नहीं। अबे तेरे को नहीं बोल रहा। अबे भाई मैं आज लॉगिन किया ना, मेरा सब सेटिंग्स बदला हुआ था भाई। सब मेरा क्रॉसर का कलर हटा दिया था, सेंसिटिविटी सब बदली थी, मेरी गन से स्किन हटा दिया था, पर सिर्फ साइड आर्म से हटाया था। और मैं वेंडल फैंटम का रैंडम पे रखता हूँ, तो ना वेंडल फैंटम की रेड थी दोनों में। सेटिंग्स क्या थी देखना। 0.44 सेंसी थी भाई, जिसकी भी थी। कितना? 0.44। तू मेरे साथ कैंप नहीं कर सकता भाई। देख 0.44 किसकी, अपने यहाँ किसी की है क्या? तो बताऊं भाई उनको अच्छे से। वॉइस बता कौन से पे लगा है? वॉइस डिफॉल्ट ही यूटी। डिफॉल्ट वही रखता है, भटूरा रखता है शायद। 0.44 किसकी सेंसी देख, पूछ किसी से, कोई भी आएगा ना वीसी में। कितनी है? मेरी 1.5 है। DPI कितना रे? डिफॉल्ट अबे DPI कितनी है? ए बॉट शिमचैन डिफॉल्ट क्या होता है बे? अबे 2 हेड पड़ा भाई। हाँ क्या, कितना DPI? अरे गधे, तेरी DPI ज्यादा है तो सेंसी तो तेरी कम रहेगी ना। मेरी 0.15 सेंसी है और DPI कितनी है बताया? 800 DPI 0.15 सेंसी। हाँ। तो मेरी एक्चुअली में लो है भाई। अबे क्या प्री फायर दे रहा बे? ना आप क्यों डर रहा है? क्या बिल्ड किया है इसको? तो 120 भाई, मुझे नहीं खेलना। अनइंस्टॉल कैसे करता है? हाँ ग्रूट, मेरा ADS भी ना वो है भाई, टैप पे कर दिया था, टॉगल कर दिया था ADS। नहीं फिर पता नहीं। मेन किसी को नहीं देता भाई। Race you! I'll protect us. तेरे से कुछ हो सकता है? नहीं तो तब तू ओपन करेगा तो लैग करेगा ही ना, क्योंकि limited resource। देखो क्या पता, तो बैकग्राउंड में चल रहा रहेगा तो अच्छे यार। देख कर ले। Wind rises. ऑफ कर दे क्या? Behold. Search for it. अल्ट देखने नहीं मिली। यार हट गए।
मेरे को तेरी The wind rises. Unsightly insects. That's far enough. Let the show begin. Come on, we can do it. Squall and fury. तेरे को पड़ी ना लो मार उसको हाँ Know your place. Quit following me. कॉपी मार दूँगा You dare to gaze upon me? लो मार उसको नाइस तू तो इसको खाएगा भी सुल्तान ये कर ले भाई तू ले भाई ये क्या है? Cry loud. हट यार Wind rises. इसको खाओगे भाई दोनों Bow your head. Quit following me. Behold. वो कैसे नहीं पड़ा तेरे एक गोली जस्ट बगल में भाई Unsightly insects. The wind rises. Search for it. Behold. भाई वो खुद पर इंस्टॉल कर देगा बस बोल ऐसे Cry loud. Too slow. Squall and fury. हाँ? क्या? करता है क्या भाई क्यों बनाता है जल्दी बता उसको मुझे लेने भाई जल्दी बता क्या? नहीं अबे डोमिनेटर को इनवाइट डाला तो बोलता है क्या भाई क्यों बुलाता है क्यों मजे लेने भाई जल्दी बता क्या बोलूं आजा मजे लेने तेरे और क्या हम जैसे सांप लोगों के साथ भी खेला करते हैं। पूछ ले उसको कैसी है यार देख रुकिया चूतिया ओह देख जो मैं देख रहा क्या रिप्लाई है इसका भाई बन गया क्या फिर से दीदी दीदी करने लगा क्या कुछ तो नहीं मेरे को बोल रहा उसका भाई बन गए क्या Aristocratic etiquette is all just for भाई तो show. कोई और Just बनाता है भाई smile and nod along. ये देख
या टिया की शादी का कार्ड देगा ये। टिया कौन है बे अभी? अबे जब डोमिनेटर था सर्वर है सब वाली है। है घर वाली। हाँ हाँ कर रहा है ये। एक सेकंड ना। I'll protect us. Leave it all to me. Dodge this. Let's roll. It's showtime. Come on, we can do it. Cool it. Steady as stone, as a dutiful maid would. Let's roll. Who wants some of this? इतो क्या खेल रहा तू? करा लेना। अबे जो भी अच्छा खेल ले, जो भी अच्छा खेल ले तो। I must leave no stone unturned. Dare to mess with me? Ha, ha. Ha. Too late for regrets. Ha, have fun with this gift. Booba, get them! Get moving. देख के स्ट्रिप देख ले। और तभी के बात कर। Truth hurts. क्या बोल रहा? बहुत लंबी बात हो गई थी। तुम जरा देखो। Years of the storm. भाई ना भाई। Steady as stone. Bring it on. पुराने मतलब दोस्त का हिंदी का जो 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 सबको धोखा दे के गया भाई। हाँ भाई हाँ ग्रुप जल्दी देख बे, पूरी चैट्स गायब हो जाएंगी वरना। कहाँ तक पढ़ा था तूने? यहाँ तक पढ़ा ना? हाँ। जो लड़की के लिए क्या क्या था वो? क्या थे? हाँ भाई तू तू सच में मेंटल स्टेट में है ना भाई? तू क्या बोल रहा है? फिर तुम लोग की क्या? फिर तुम लोग आगे आ गया मैं। रुक जा ग्रोट एक सेकंड रुक जा, ये राउंड के बाद कर रहा मैं। अरे भाई क्या बोल रहा है तू? रेज डैमेज्ड, रेज टिंग्ड है भाई। तुम लोग रोस्टिंग वाली बात देखो थोड़ा ऊपर।
अबे ये बच्चा है भाई, अभी भी बड़ा नहीं हुआ, छोड़, जाने दे, ये मैसेज मत कर, जाने दे भाई। अभी भी बच्चा ही है भाई, छोटा है ना? बहुत छोटा भाई, बहुत छोटा, बेचारा बड़ा नहीं हो पा रहा भाई, तकलीफ है इसके दिमाग में। भाई। खुद ने किया है अकाउंट और ये हमको बोल रहा है चोर। अच्छा लगा भाई मेरे को। ये मैं भी ट्राई करेगा एक बार मिस्ट्री। हट से यहाँ। More speed. भी है। दोनों है क्या लॉन्ग? दोनों लॉन्ग के बजाय जल्दी बताओ, मैं वॉक नहीं करूंगा। अरे कॉल दो गूंगे लोग। कैरेक्टर तो सही, ये इतने खास नहीं लगा। डैमेज्ड है, बहुत डैमेज्ड है भाई, तीन बॉडी लगी है उसको। नियॉन फॉल्स। Time to scout. Oh there. Come and see these rare, हाँ। precious curios. Need another handsome sum today? अब एक आइक का बाय बोनस खेलूंगा भाई मैं। आ रहे हैं, अच्छा। अरे भाई मत मैसेज कर भाई उसको। तेरे को बुरा लगेगा। किसको? मेरे को थोड़ी ना बुरा लगेगा। अरे तो मत मैसेज कर भाई, वो अभी उसको थोड़ा बड़ा होने दे। और तेरे को भाई। हाँ रुक जा एक सेकंड करो। वही बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा और बड़ा होने दे भाई। वो छोटे से दिमाग पे इतना प्रेशर मत दे तू अभी उसके। स्ट्रॉबेरी, हाय, वेलकम टू स्ट्रीम। आउट पे चले जा, गन ले ले। इधर कॉल्स।
होल्ड 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 More speed. हाँ Please, show me your Yes, sir. prescription. बस ये ले लो। हाँ रुक जाओ Oh, wonderful. Another flower is blooming. This is a peaceful neighborhood. अरे आओ 3 मारा भाई Oh, wonderful. Another flower is blooming. मेन डिफॉल्ट यार अननोन हील अप कर ले पहले बाहर निकल के This is a peaceful. अरे गधा है बॉट भाई 3 मार रहा है यार तुम लोग क्या कर रहे हो Wonderful. Another flower is blooming. इसके पास नहीं है मांग लो भाई This is a peaceful. Oh, wonderful. Another flower is blooming. अरे भाई वेरी नाइस हमने भी उस दिन ऐसे ही बोली थी। More speed. क्या ए भाई वेरी नाइस। देख रहा ना ग्रूट क्या ये चैट चैटें चल रही है क्या अभी भी तुम्हारी? हाँ तो मैं स्ट्रीम तो कर रहा हूँ गधे अरे छोड़ दे भाई, तू गेम में ध्यान दे। अबे तो उसने उसने अभी वो ओ शिट बोला था ना sarcastically तो मैंने क्या बोला कोई बात नहीं तू भी कमा लेगा पहले सीए पास कर ले भाई फिर मैंने बोला ओ शिट बोलता गधा मैं तो देख रहा भी नहीं भाई चैट में। नहीं देखने का। स्ट्रीम बंद कर रहा फिर हाँ कर देख नहीं देखना भाई। You want to learn क्या some ही करेगा Favonia's देख के? blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my मेरा और words. खत्म नहीं है इसका है नहीं बंद करना मेन 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 है अरे स्पाइक जाओ भाई केजे स्पाइक क्या है जा भाई कैंप क्यों कर रहा है यार स्पाइक ड्रॉप होता है तो सबके सब स्पाइक पे इकट्ठा हो जाया करो यार क्या बोलूं मैं हाँ ठीक है वो नहीं वो तो ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ट्रेड कर लिया कोई दिक्कत नहीं भाई अबे रुक जा
बी आएंगे बी आएंगे। आफ्टर राउंड ब्रो, आफ्टर बाय फेज। नाइस। वन AFK ब्रो, वन AFK। मैं AFK वाले को मारने जा रहा हूँ। बैकस्टेप जा रहा हूँ मैं। भाई ये नाइफ करो, नाइफ करो, नाइफ 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 नाइफ। अरे नाइफ करो भाई। अरे छी भाई, बॉट्स भाई, नाइफ करना था। बुली करो भाई उनको, अपन जीत रहे हैं, बुली करो। बुली करोगे ना तो वो लोग और पैनिक करेंगे और हगेंगे भाई। इसका है तो यहीं से डाल, ब्लाइंड डाल, कॉल्स इन्फो मिल जाएगा। More speed. ब्लाइंड डाल के पीछे आ जाना। मैं मिड देख रहा हूँ। More speed. मिड क्लियर है। बस इतने थे क्या यहाँ पे? मैं बैक स्टेप कर रहा हूँ, मैं बैक स्टेप कर रहा हूँ। टिम्बर उनका गया है भाई। और भी रहेंगे वे। मेरे किल से, दोनों मेरे किल से भाई। More speed. होल्ड कर, होल्ड कर। नाइस ट्रेड यार केजे भाई, मजा आ गया। केजे भाई, केजे इधर आ भाई। केजे खड़े हो भाई, थैंक यू बोल रहा हूँ। देखिए सुल्तान बाफ। भाई देखो इसने टॉगल कर लिया है बंदे ने। अभी देख कस्टम में कितना मार रहा था, अभी देख। चले सुल्तान, ये देख कस्टम में कितना मार रहा था, अभी देख। NHK भाई बंदे से। अरे भाई था उसने। ब्रो इंग्लिश इज नॉट देयर ब्रो। जी भाई हग्गू कर दिया बंदे ने। तो अगर ये निकाल लिया ना भाई, 1000 2000 VP तेरे अकाउंट में। नहीं भाई 2000 की एक स्किन आ जाएगी ना। अभी सही में निकाल लेगा क्या? 2000 VP आ जाएगा। तुम लोगों से दूर हुआ तो प्रोग्रेस हो गई। अरे 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 इंटर की पढ़ाई पुणे में हो रही है मेरी। इंटर क्या होता है बे? इंटर, अबे छी भाई, इंटरव्यू बोल रहा है। निकाल भाई, मैं राउंड निकालना है, देखो मारने से नहीं होगा। वो पीछे आएगा देखो मारने के लिए। मिड मिड शॉप, यस। आइए आइए।
एक सेकंड। अबे उसको बोल पहले बड़ा हो जा भाई। पाँच मिनट बाद मैसेज किया भाई, मतलब मैंने मैसेज डाल के छोड़ दिया, ठीक है। सोच के मैसेज कर रहा, सोच के। काई की एंट्री रुकवाई भाई, अंदर तो रहना था तुझे। पनौती तो तुम लोग हो, ठीक है भाई। अरे कवर दो भाई। जी जी। सिंचन तेरी बारी, अगर तूने राउंड नहीं अभी पाया जिंदा है पर। हाँ अभी तो राउंड निकाल लिया ना, तो 2000 वीपी। हाय ये भाई। हाँ दे रहा। अबे तो तेरे को अंदर ही रहना था, बाहर क्यों आया भाई? ना भाई ना भाई, बहुत जल्दी खत्म होता। That's what's nice about a house. Play. That's what's nice. आई का मैं पुश किया ही नहीं, मैं तो बस बैठा हुआ था हॉल्स पे, मैं लो था भाई। दस टर्न हो गए। Josh and his family. They want to know who you are and what you want. Jump with me. I am talking to you. Don't leave. I have to leave at some point. Phone. Are you talking through the phone? The two people associated with this case died recently. So you would know what a phone is. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tataris Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tataris Suna? But that's all the way in Inazuma! Is it just Paimon or is it kinda
unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that. Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Great, let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. नहीं Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. If only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. Oh, you're the traveler, you say? स्पाइक ले आओ कोई एक मैं डुएमलिस्ट हूं भाई मैं सब मारता हूं What's with that face? Don't believe us? No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started 52 examining the evidence. 52 raise. Sorry. So what, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kind of lacking. Low. Very low. Traveler, Raise very, I hear very you've low. helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. GG. I see. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive or a first read? Full push. Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a Kabuki Mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This Kabuki Mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow, did I get lucky! KJ, 4K and I give VP. This part's important. I just wanted to make it stand out. If you it just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Hey, by the na. नहीं ये गधे को स्किन दिया ना. Two missing people in the story. Skin लेके जाएगा. चांटे मारूंगा. That's right. What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmith? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff.
That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the... Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. लो माँ, मैं स्मोक कर रहा था मुझे दिख भी नहीं रहा था पता है? Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Dog no, halls. Yeah, blind halls, bro. How creepy. Never mind. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree. It does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. बड़ा लिखने में भी उसको टाइम है भाई बंदे को इसने भी ये स्टोरी लिखा है एक मिड डोर सर Oh, and please read my essay draft as well. मिड डोर्स मिड सेव कर रहा है Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. तो मेरे को कौन से ज़्यादा FPS आ रहा है भाई? Just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me... We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay! All right, thank you. If you find out any more... Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Spike diffuse, post plant कहता है उसको. Bro, first let us plant. You put Molly, then play however you like. Okay. It's okay, bro. Just put your alarm bot. Oh, quick, let's catch up and see. You playing good, just don't huggu. More speed. हट वे, revive कर रहे.
इसका खत्म है भाई. If you guys take this round, 1000 VP each. Aye, GG. Traveler, If you Paimon, clutch, there you I are. give you VP for one skin, bro. Nahida, bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape Too low, or... bro. Ah, it's him! Raise low. GG. Sure enough, you're here. Hey, what are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. अबे तभी सोचूं मैं It was भाई my मेरे को idea इतनी to set the दिक्कत क्यों हो रही balladeer है यार, रुक free. जा. We made a deal, and he's gonna do some अबे मेरा investigation मिनी in मैप भाई Irminsul रुक जा, for मिनी me. मैप भी हग्गू किया है मेरा. Deal? You sure you trust this guy? दोनों सब कर दिया भाई. What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. अबे कैसे घुसो? Not साइड a क्लियर good थोड़ी ना start. है. Could I ask you all to please calm down? But अबे नहीं कवर दे worried सकता. about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see Nice, people bro. questioning the Come god of on, wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us. As long as the terms are reasonable, हेड लगते हुए I दिखा don't मुझे. think there's a problem in को. making a deal, even with the balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you, considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. हॉल से बैठना था भाई. हॉल्स बैठना था. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. क्योंकि you are bot, bro. That puts him in quite a precarious position. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. इतना demotivated कौन भाई? You mean he's not a हाँ harbinger फूल दे दे anymore? भाई. आई ये. I take no pleasure in 3A saying this, 3A but 3A जाओ जाओ it जाओ seems जाओ. as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Yes, we need rounds, bro. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Nahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. Wait. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit.
Yes. As I told you once before, अरे यार there's तुम लोग भी information मार लो about your किसी twin in को Irminsul. मैं ही सबको मारूं क्या Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You यार may मैं ही remember सबको me मारूं भाई mentioning that the Fatui had दो not को लेके included क्या your मैं twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's कौन possible गया आगे that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one we of them, save bro he'll be better acquainted with we this save information then than next I am. yes bro we save He was yes granted the bro power then to next connect with we try hard Irminsul and when he push almost and we became the win god bro of a new era. Even though he yes no bro longer no has the Gnosis, yes over some time and we traces of win its over power time remain let's in go him. He can still connect. just watch The bro how amount we of win over information time in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, yes bro kill even everyone for me. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information and should be able to find it more quickly. have one more blind Or please what if... Paimon just doesn't trust him. He's 22 treated dug us out as enemies every time we've run into him. जाना I अंदर understand. But sometimes everything is dictated by which side you're on. सुल्तान अबे अल्टी कर दे How जाके things will go in the future साउंड निकालना depends on अपन what को information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected winnable several round times throne before. let's go There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on now guard we against win the Balladeer. just wait and watch bro But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've I more than play for earned it. picks don't play for utils I'm and still teamwork worried about just this play for idea. picks just Is there kill anything one we can and do to help? change your position I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, don't push there it don't would push put my mind at ease. अरे यार Of GG course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Great. तेज Thank कर भाई you. 2 skin Prepare yourselves. I'm going to transport you into I will also Irminsul. give 2000 अबे मैं तेरे को स्मर्फ अकाउंट परमानेंट रखने के लिए दे दूंगा Wow. उसमें तो It बहुत looks सारी pretty skins है भाई different here compared to last time. The colors are Long. gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards, but right now, I'm on temporary release, so maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. Fine. Let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali,
I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Wow. So this is the inside of Irminsul. Ooh. Paimon's never seen anything like this. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. These sapling things have spread out. Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. Hello, hello. हेलो हेलो क्या रे हेलो हेलो आवाज आ रही? अबे कोई बार बार अकाउंट लॉगिन करना भाई मेरा. हाँ वही किया भाई अब. It looks the same in किसी every आवाज आई थी क्या? मैं जब direction. हैं? हाँ ले लेना रुक जा. क्योंकि वो पता क्या कर रहा है? No वो wonder भी he लॉगिन कर रहा है mentioned about ना? getting लॉगिन lost. करता है और ना मेरा वो है ऑटोमेटिक He was से करके actually उसको telling पुश the टू टॉप truth. करके डिफॉल्ट कर दे रहा है. Is he mocking me again? सब बॉन है Well, भाई what मेरा is it सब this बॉन है. time? रुक जा. There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you हाँ भाई मैं relax your किसी guard a किसी को नहीं little? देता. एक ही के पास है वो भी पता है. वैलो खेलता नहीं है ज्यादा. We're here. ईमेल मैं दूंगा जब मैं वैलो अकाउंट का मेन नहीं देता किसी को तो ईमेल क्यों दूंगा भाई? Lesser Lord Kusanali. Good, you made it. Are चल अभी you तो मैंने ready? पासवर्ड चेंज कर Ready दिया. when you are. ये देखता. Then please begin. Preparing to access cognitive पता है कब currents. खत्म हुआ? कब अचानक से मैं Establishing जब waypoint. मैच खत्म होने वाला था ना जब इसने 2 किल कर लिया था Balladeer is तब से ना actually बंद हो doing गया what भाई. Nahida tells उसके बाद him. तब से मैं जैसे ही Guess he लॉगिन must करता ना want कोई to लॉग stay आउट कर देगा alive. वापस. The rest is up to you. Will do. Huh. For once, we're the ones with nothing to do. Traveler, Paimon, would you like to talk? हाँ रुक जा. Yes. चालू करो I've भाई. also invited Paimon to join. Huh? नहीं अरे What हाँ यार the- भूल गया था. रुक जा We रुक can जा talk to each other inside our heads? रुक जा एक सेकंड. That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while.
मैं देख रहा हूँ कोई Paimon's खेल never तो नहीं रहा tried उस this पे before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a खेल bit रहा of a अभी एक। walking contradiction? He's always talking खेल back, रहा है but he मैं तेरे seems को to ना listen भेजता to हूँ what you तो say. जैसे ही लॉग आउट करेगा ना मैं उसको बोल दे रहा हूँ लॉग आउट करे तो मेरे को मैसेज दे दे As I've told you before, मैं फिर तेरे को दे there दूँगा are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Well done. Smart and attentive as always. So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro-Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. नहीं भाई मेरा पेपर So I guess they got it आज right. मार्क्स का था नहीं हाँ चल खेल ले मैं फिर फेड खेलूंगा Well, they guessed right about one thing. एग्जाम चालू हो गया Tatarasuna was sabotaged. फिनिक्स खेल Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. मिलते हैं आराम से 20 क्यों आराम से मिलते फिर क्यों आई जब आराम से ही मिलना था तो नेक्स्ट क्या है Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. Have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Didn't Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. नहीं ये डिस्ट्रिक्ट पे से रहती है तो 80 मार्क्स की चल के देखना मुझे नहीं बता दे रुक बता भाई टोटल सुन मिड टर्म होती है ना उससे पहले दो एग्जाम Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. हाँ और फिर फाइनल होता है Wait. तो अभी कितने मार्क्स का है 25 का है ना वही तो तू 60 80 काम पहुंच भाई हेलो It's similar to those saplings. What could it be? सेंसी हक दिया बंदे ने भाई Anonymous data. 0.01 कर दिया सेंसी Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. और एसएससी में थे इंग्लिश में 59 थे Just wait. और ये अपना कौन सा और सब्जेक्ट होता है Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. Okay, समझ रहा मैं तेरी तकलीफ There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... और मतलब सब्जेक्ट है मैथ्स तो जाने दो मैथ्स खराब था मेरा 80 में से फिर साइंस हो गया एसएससी हो गया मैथ्स हो गया I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality,
as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatara Suna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose, they are motivated. अबे तो पब्लिक पूरी उधर है भाई। Good hi. हीरो तेरा सामान टाक 55 अबे शॉर्टी से मेरे को 8888 कैसे दिया बंदे ने भाई? अरे दादाचे कपडे बाबू। ठीक है दोनों साइड से घुसो। Bro, what the hell? What the hell bro? Bro. मेरे को कहीं और जाना था। अबे अपना ही है ब्रेम भाई, क्या अंग्रेजी में बात कर रहा है? का डर डर के खेल रहे भाई वो लोग तो। तेरा माइक्रोस्कोप ने पूरी आंखें खराब कर दी। अरे एक ड्रॉप एक सीटी है, ड्रॉप नहीं सैंड्स, रोप एक रोप एक सीटी, दोनों रोप्स है, दोनों रोप्स है। रोप साइफर का किल है, पीछे हो जाओ, साइफर का किल है, मत मरो। जी जची ये शेरिफ दे, मैं बोनस खेलूंगा। मिस्त्री? दे रे। नहीं तू नहीं बे, ये गधे के पास शेरिफ है ना, ये दे रे शेरिफ दे। Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. Thank you. यार मेरे को उसका घर चाहिए। मिस्त्री? हाँ? किसी का घर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे मैप पे? गूगल मैप्स। नहीं पता ही नहीं हो, नंबर हो सिर्फ मोबाइल नंबर या स्नैपचैट आईडी हो तो कैसे? भी गूगल मैप्स। तो मेरे को पता ही नहीं वो कहाँ रहता। भाई मेरे को उसका घर चाहिए। सेव राउंड है उनका। मुझसे पूछ सकती वो कहाँ रहता है, बट नहीं पूछना। कवर तो भाई 68 दिया मैंने भाई, धोखा भाई। ब्रीच लो है भाई 68। अरे ठीक है ना, बैकस्टैब भी तो लगा रहा है, चल बे हट। रिपोर्ट फीनिक्स ब्रो, वेरी टॉक्सिक। उसका आफ्टर शॉक भी गया भाई, इजी भाई। मॉली रुक जा, मॉली निकाल के रख, मॉली डाल देना कोई भी पुश करेगा तेरे को तो। ड्रॉप साइफर कूदा, रुक जा एक मिनट। हाँ बोल बर्रे मोटू। मैं बोली मेरे वाले का नाम भी ए से चालू होता है। किसका? मेरे वाले का नाम। रुक जा, तेरी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ बोल। मैं बोली मेरे वाले का भी ए से चालू होता है। हाँ ये मेरा ही नाम है। नहीं तेरा नाम आई से
खत्म होता है उसका नाम टी से खत्म होता है जी भाई ठीक है और भाई वो धोखा यार जा भाई तू अरे धोखा क्यों भाई ना भाई नहीं धोखा वो 8 में है, पर वो क्यूट है अरे कवर ब्रो कवर वेयर बेटिंग ओनली रेज क्यूट है ना लेना उसकी नहीं तू जा यार धोखा भाई अरे मैट्रिक्स वो मेरा क्रश नहीं है ऑफ सेव करेगा वो ऑफ सेव करेगा रेज गो टेक हिज ए मिस्त्री वो मेरा क्रश नहीं है वो मेरा क्रश नहीं है तो वो बस अच्छा दिखता है वो क्यूट है बेबी तेरा तो चेहरा ही नहीं देखा है मैंने अच्छा ठीक है भाई ग्रूट बोरिया बिस्तर बांध ले भाई अपन निकल रहे हैं धोखा भाई खाना है ना नहीं साहब देखा है मैंने ग्रूट का भी शक्ल देखा है थैंक यू वेरी मच ब्रो आई पोस्ट प्लांट मिस्त्री तुम लेकिन लोग के जाओगे तो है ऑलरेडी रुक जा मैच में हूं मैं Wait. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatara Suna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me. And now, every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatara Suna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma. And it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. Is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events.
Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatara Suna. Did you really think you would be able to see through my plan? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. Anyone feeling jealous? So you're really going to destroy this place? Anyone feeling jealous? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a What the heck, bro? 4 teammates all Whoever waiting. you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. Please report. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui harbinger. Call me the Doctor. The Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet.
Make तुम no लोग हल्के में mistake, ले रहे हो क्या even मेरा without मेरे you, कॉल्स को हल्के मत that लेना pure, भाई innocent मेरे calls puppet would कभी गलत only नहीं end up रहते। being used by someone else instead. हाँ What भाई, other कोई stick reason नहीं would a करता। human have for हाँ, देख, befriending location one पता who होती is तो not stick of नहीं our kind? लोकेशन पता हो तो स्टिक नहीं करते भाई। You also want, bro? Take, bro. If you give him Take, my bro. heart, Take. I give. You take. tell Take, him Take. that both Nagamasa and I, ये तूने एक बॉडी मारा उसको। one of us, he has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones मैंने उसको लो किया भाई। like that हल्के में लेते हो क्या तुम लोग मेरे को? are people like you. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what मैंने भी उसको डैमेज happens. दिया भाई। भाई Will your चोरी कर puppet रहा भाई ये friend बंदा become सबके a kills भाई human? रिपोर्ट भाई। No, भाई that ऐसे would हेड prove वेड quite काम नहीं चलता भाई impossible. रिपोर्ट। अबे Mr. हेड मैंने भी Niwa, हेड दिया भाई उसको। ओए छी। already हाँ भाई। dead. What a pity. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. फिनिक्स खेल ज़्यादा होती है क्या? What fun it भाई अब तू खेल तो was. रहा है भाई। I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, I'll open let's door. make Wait. him our Wait. newest comrade. And if not, let's turn him Nice, to bro. dust. Cover. साइट है। Hey, Nice. are you all right? Dottore. Dottore! Race, you have ulti, okay. Free kill. Don't throw, just push without guns. Good. Was that TT bro, on your right, Race. Settle them, bro. turn into a mechanic from Fontaine? But why did we see things from his perspective? What? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Huh? Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. We need to give him some time to process his emotions. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future.
Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Neo's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Neo fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. He thought Neo had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly! They all So the know doctor just killed an bro. innocent man If and you pinned don't, everything bro, on the I will victim? throw you. That's terrible. I saw, bro. One taps only, okay? You died, bro. Yes. You died, bro. Only if he understands this, This brim can is he throwing choose a very new much, path guys. forward. Please. Mary. Tatori, you brazen-faced... Neo didn't run from justice. You killed him. ठीक है? बे अपनी शरीफ दे रे बॉट दे ही नहीं रहा भाई नाच रहा है Shall we see how he's doing? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. They faked. It won't. They faked A. I'll keep my end of the deal. Hey, Bro, are you investigating the stuff we want to know about? Phoenix, yo. That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. If you ace, I give you Anyone VP, who okay, comes from one beyond gun this world skin is free. not counted as part of If you Tvat. ace and refuse. Does that mean we have to leave empty-handed? Yes, everyone is 1 HP. Don't thank me just yet. Yeah? You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? The reason why there are records about your brother in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination when he arrived in this world. Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? Okay. I'm baiting me. The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, not B. and lived Only with your A. brother for a time. Only I don't know the A. No more details. long. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Give me your hand.
119 Viper. Nice. Take my Phantom Rays and kill him. Can Yes, you take hear my my Phantom. voice inside your Reload head? first. Sheesh. No, I can't do anything like that Push, anymore. bro. नहीं आएगा, At नहीं आएगा. most, all I can do is exchange a few Yes, words with push you. both So of tell them. me, Nice. in this very. world, is it possible to change the past? Raise. ये Vandal लेना. Done. Huh? What the? What happened? No, I have only no saw you cracks, hold bro. hands for a second. I am Nothing. So poor. Look I at was my just cracks. thanking her Only for 200. helping me. Very poor I am. So long. They will push me. I suggest okay? you get yourselves out of here quickly. Where are you going? They will. Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. They are very much at A. From this day forth, the names Balladeer and Kabuki Mono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. नहीं भाग रहे वहीं खड़े हुए हैं भाई कौन गलत कॉल दे रही है You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a, but if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once उसको and लगा ये for मर all. गया रहेगा भाई उसके हाथ से फैंटम थी और उसने इसको एक हेड Oh, he दिया disappeared. Come on, we gotta find him. जतलान भाई देना Oh no, he's really. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. C, B, they are. I didn't Very think much he'd be all- capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities? And it took... Where the heck did he go? Ugh, it's all our दिमाग तो fault. है We were supposed to keep an ठीक eye है on स्कैम him. कर रहा था भाई अबे गन Sorry, मत लेने देना उसको Nahida. गन लेने आएगा वो Don't be. It's not your fault. Please, let me hand... We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. गन दे देगा भाई तो उसको सब डाल दे हाँ हाँ सेशल भी डाल दे ब्रो ropes see brim throwing अबे जाके ऑर्ब ले और अल्टी करते हैं दे आर डिफ्यूजिंग अबे डिफ्यूज कर रहे वो लोग देखा भाई तुझे देखा 4K में अभी मेरे को लगता है थोड़ा सा खेलना पड़ेगा इन लोग बहुत बजट है भाई हटो हाँ भाई अभी अभी मैं मारूंगा मेरी बारी मैं नहीं दूंगा अरे अरे हाँ ये आएंगे वो फिर से हाँ हाँ रिवील डाल के जा रहा हूँ ब्रो रिवील डाल के जा रहा हूँ रुक जाओ अरे रुक जा रिवील डालने दे चचा बी आ रहा आर्केड से आ रहा है Knights दो and arcades. aristocrats share the same cultural heritage, but the अबे knights मेरे had को enough blind sense मेरा। to do away with all the superfluous detail. Why you all steal my kill? लगता अब मेरे को खेलना ही पड़ेगा भाई
नहीं है मेरे पास उतने credits. Chris, can you buy? ये ले रे, ए वो दे, हट, चल बे. You want to learn some Favonia's blade work? भी हो सकती है. दे मैं क्या? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. अरे यार सामने था जी हाँ थ्रो कर दिया बंदे ने वो उधर ही आएगा. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. आइए प्रो में भाई मैंने नीचे से कैरी किया तुम दोनों को भाई शर्म करो. क्या एरर हो जा रहा है? Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. तो मैं भी किसी को नहीं देता भाई मेरा भी गया ना. हाँ रुकना वो आ रहा है. Hello, traveler. Have you ever heard of a moment of dreams? Oh, that sounds like some kind of sweet drink. अबे हाँ ये कोई तो खेला है मेरा. I'm afraid not. It's the name of an event we started to hold regularly. Dreams have become quite the hot topic in Sumeru, and many people are excited. The same goes for me. The last time I dreamed was when I was but a little child. Oh, right. Everyone's... Yes, we organized an event to give everyone with new dreams a platform, and thus our event, A Moment of Dreams, was born. So, it's kind of like a fireside chat? You could say that. We hear... Yeah, but to us... Wait, but if there are free drinks... Oh, really? So you mean... But... No. We need... Please allow me to address you two as... Oh. Now you seem in... Rest assured. Wow. Sign us up. But wait, Paimon's getting ahead of herself again. Why aren't you saying anything? Alright, hurry up and take... अबे 400 IQ Very good. जो भी मेरा अकाउंट हैक करके खेल रहा था ना क्यों हेलो वो खेल रहा था वो खेल रहा था डुओ ठीक है मैं अभी गया पीछे अपना उसमें देखा Well, I suppose it must be accumulating knowledge and sharing your experiences. जिसके साथ वो डुओ खेल रहा था ना वो मेरे में ऐड है. It's all about the title. From now on, Paimon will be known as Paimon, the Dream Expert. Sorry to interrupt, everyone. We finally have some real dream experts joining us. Esteemed experts, this way, please. Now, if anyone has any questions, please feel free to ask them. They must be dream experts from another land. Oh, I have a question. Me first. No rush. Everyone, please line up and ask in an orderly fashion. Nobody on me. Whoa. Paimon didn't expect them to be so enthusiastic. My question is simple. My everyday life is very difficult, so I would like to become a slime in my dreams. How can I do that? On my way up. Oh, Paimon
details. Paimon's had this kind of dream before, so she knows a thing or two. The first time, Paimon became an animal slime. Paimon was shot by an adventurer's arrow and flew in the sky all night long. The second time, Paimon became a dendro slime. A group of kids thought Paimon was a radish and pulled out all the grass on her head. Oh, it was super painful. The third time, Paimon became a cryo slime. In the end, Paimon was captured by a chef and turned into a smoothie. And the fourth time, Paimon became a powerful geo slime and went to take revenge on the forest boy that used to bully Paimon. But then the boar showed up with all of its relatives and Paimon lost again. Wait, why did all of your dreams end so tragically? Because slimes are monsters, even though they look cute, they usually cause trouble and end up getting killed by adventurers. Things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. Duelist, please, bro. We duelist all. Arey wo mic I suppose you're right. They are monsters, after all. I just want to experience a different life, but it seems that becoming a monster would be even worse than my current life. Maybe I'd be happier if I became just a regular finch. Or fish. Looks like being an expert is way easier than Paimon. Next! Oh, it's my turn. Esteemed expert, I want to know what posture I should sleep in, so I can have the same dream as the one I had last night. और बोलेंगे हम लोग chill कर रहे हैं. हम chill कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, hug रहे हैं. You're supposed to be helping. हम try hard. क्योंकि हम कॉम्पी में चार rank D rank about the dream you want to have again. Oh, it's quite ordinary. I sat and chatted with my wife on a sunny day, listening to the breeze blowing through the valley. Well, unfortunately, she passed away. No, it's fine. I didn't make that clear. I just want a chance to see her again. 1.5 महीने का ब्रेक लिया था ना उसमें मेरा मतलब मैं भूल गया भाई एम really about posture. What you think about right before falling asleep is probably more important. Oh, is that all I have to do? Think about it. If you're the one thinking about her, and you're the one that'll be dreaming about her, then it'll be easier to connect your thoughts and dreams. You do have a point. I'll give it a try tonight. Thanks for your wise advice. Oh, my turn, my turn. I want to know the name of the plant in my dream. I want to bring the souvenir box to my room into my dream. I dreamt of a raven flying over the wasteland last night. Does that have any kind of special meaning? Hey, no rush! One at a Hashtag क्या है? तो मैं हैशटैग थोड़ी ना देख सकता हूँ गधे मिड गेम भी नहीं अभी तो लॉबी में हूँ भाई वो जेट इंस्टॉल ऑफ किया भाई questions were way too difficult. We मेरे don't अकाउंट से भी कोई actually खेल know रहा है क्या? anything more than they do. We're just more experienced dreamers. That's all. अभी स्मॉल में भाई You do have a point. इसी का हक था भाई It's more rewarding to रीमेक नहीं explore करेंगे and पर नो रीमेक contemplate the ओके meaning of a दिस इज question अनरेटेड than to focus on the answer itself. Right now, these people क्या बात कर are like wanderers who've starved for 3 days. Oh, and now that Paimon has said that, साइका you know who होता है comes to इसमें mind? क्या बात कर रहा है भाई तू Bingo! If Drop she करना। was here, she'd probably be making भाई some similar. Unfortunately, स्लैश रीमेक डाल she's super busy. स्लैश रीमेक डाल Dear experts, we have another guest डाल who तो would दिख like to जाएगा। consult you. But you. But this guest is. My question is, why didn't you immediately tell me about such an interesting place? Huh? Nahida? How did you get here? Interesting events like the moment of dreams don't happen every day after all. No matter how busy things are, I'd still set aside some time to check it out. Anyway, I really didn't expect to meet you here. अबे रेना ने हील कर लिया था तेरे को If ब्रो there's anyone that understands dreams, it's you. Reina, You if you should be able to ace, help you us ace, answer okay? all these questions. You're not wrong. All right, they can ask me anything. One more. Yes. No, he was very noob. Don't say AFK. No, What's wrong? don't say bro. You were all noob, so you excited a thrower, minute bhai. ago. What? Even so,
It's not like I look super intimidating or anything, right? And in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru. Yet they didn't even flinch at you. Alas, the interesting questions have all vanished in an instant. It appears I'm the one spoiling the fun. I don't want to get in the way of the original purpose of a moment of dreams, which is to now the atmosphere here is like water poured into a container. The water is more secure and settled, but it has lost its free-flowing nature from the river. I just want it to be another drop in the water, not the cold and restrictive container. She's sulking. Where is your bro? It's alright, everyone. No need to be shy. The Dendro Archon is really nice, so please just go ahead and ask. Otherwise, she'll leave. All right. I'll give it a try. Oh, it's the slime guy. Hey, drop the nicknames, would you? Besides, I don't want to become a slime anymore. Maybe a finch or fish is more suitable for me. I see. So you want to become a small animal in your dreams, right? Why do you think that sounds good to you? I guess I just want to experience something different. My everyday life is nothing but the same. The sky is right above me and the ocean just over the horizon, yet I remain caged in a life of monotony. So you want to experience something new in your dreams? Sorry, I'm getting a little confused. Why don't you seek out some new experiences in real life? Because if I don't work, I won't have any mora. Sure, I don't want to be out hammering nails and cutting wood every day, but I have aging parents and young children to take care of. By the time this all dawned on me, I realized that my life has already been filled to the brim by trifling matters, and I have no more freedom. But if that's the case, then even if you became a flying bird or swimming fish, you will still be hammering nails and cutting wood in your dreams. The reason is you've already been caged. It doesn't matter what your physical body turns into. Your mind will still be stuck in the same predicament. Really? That sounds pretty terrible. Then what should I do? I don't know everything that you're going through, but how about replacing your hammer? Huh? Replacing my hammer? That's right. Having worked for such a long time, you of all people must know what makes a good hammer. Well, of course. A good hammer needs to be heavy enough to drive the nail in with just a couple taps. And the handle has to have a good grip to it, not too smooth. Come to think of it, I haven't replaced my current hammer in quite some time. You should replace it. Then decorate the handle with something you like. Maybe some ornaments, fur, or hard leather wrapping. Then, write the names of your children on it. That makes sense. I think it'd give me a good boost of energy at work. A new sense of adventure often begins with the little things in life. You don't need to become a bird in the air or a fish in the sea. You only need to do your best in life, and all those things you cherish will become your source of happiness. Yes, I get it now. This is a real eye-opener for me. I'll go and pick out a new hammer right away. No, I should make one of my own. Thank you, Great Dendro Archon. That's Arnahita. Only you would know how to get right to the heart of the problem. Actually, I didn't really understand the problem. Huh? I gave him that advice because I once saw a worker doing the same thing. Whenever he became tired, he would look at some names on the handle of his tool. After a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people to him. After observation, I know this kind of behavior motivates people. But why is that? Is it because of excitement, anticipation, or helplessness? I really don't know. Oh, Paimon gets what you mean. Huh. Paimon had no idea it takes you so much effort to understand these kinds of things. That's why I was a bit nervous just now.
But luckily, seeing his happy face in the end reassured me that I didn't say anything wrong. Don't mind me, though. This is just my way of learning. Hey, don't forget about Paimon! Everyone knows that Paimon's also super skilled at reading people's feelings. Thanks, you two. That makes me feel a lot better. Let's move on to the next question, shall we? I already asked the experts my question earlier, but I wanted to hear the Dendro Archon's response too. What should I do if I want to see my deceased wife in my dreams every night? Longing for the deceased. Even if you keep reliving those beautiful memories, it'll only highlight the emptiness in your real life. If your wife were still alive, she certainly wouldn't want to see you like this, would you? No, I suppose not. But our time together in my dreams is not just reliving our past together. I don't know. Maybe it's because I miss her too much. But it's really as if she had come back to life in my dreams. She even remembers each and every dream. After I wake up and then continue dreaming again later, we can pick up our conversation right where we last left off. That's really amazing. Statistically speaking, continuous dreams are extremely rare. It's almost as if my wife has obtained a second life in my dreams. But the more vivid she appears, the emptier I feel and the more painful it is when I wake up. I don't know whether to call it a blessing or a curse. Maybe all of this is rooted in your deep longing for her. Are there any unresolved matters or regrets between the two of you? I don't know. I suppose my biggest regret is that I couldn't spend the rest of my life with her. I really felt like I was ready to move on. I wouldn't be so hesitant now if it weren't for these hyper-realistic dreams I've been having. Huh. You know, they say that whatever's on your mind is what goes into your dreams. But dreams are and will forever be just dreams. We are people living in the real world. It's not good to be overly obsessed with dreams. All it'll do is fill up your mind and eat away at your thoughts. Yes, I know. That's why I'm also a little disappointed in myself. I still need to take care of our child. And it's probably not good to let her see me in such a state. Anyway, thanks for your advice, Great Dendro Archon. I'm a little worried about him. I hope he can find a way to cheer up soon. I think I can handle things from here. You don't need to stay here if you find it boring. You're here to have a good time after all. Are you feeling any better now? Yes. I think the Dendro Archon made a really good point. I need to stop dwelling on my wife like this and move on with my life. Now that I think about it, my wife and I always meet at a familiar place in my dreams. I know where that place exists in reality, but it's a bit far and dangerous. I don't dare to go there on my own, but at the same time, I feel as if I should go and have a look anyway. Perhaps I'll be able to move on once I see that there's nothing there. Otherwise, I'll keep on feeling like everything is covered in a haze. Once I can stop dreaming about that place, I'll probably be able to get my life back together. Actually, you two are adventurers, right? If it's okay with you, could you escort me to that place? Yeah, it might also be a good chance for us to unwind. Even if you can't see your wife there, taking in some nice scenery will definitely help cheer you up. Yeah, I hope so too. All right, go ahead and get your...
रुको अभी एक सरप्राइज दिखाता हूँ। Are you headed off to some interesting place without telling me again? Huh? Wait, aren't you supposed to be answering questions? I just finished, and they really got a lot out of it. So many interesting and novel thoughts. Anyway, it looks like you're going somewhere. Why don't you take me with you? Oh, there's no need to trouble you, Great Dendro Archon. I imagine you must have many other important things to deal with. No need to stand on ceremony. Besides, I wouldn't have asked to come along if I didn't have a good reason. I wanted to use this opportunity to discuss with you some things that are puzzling me right now. Huh. I didn't know the Great Dendro Archon could become puzzled too. I'm not all that different from you, you know. Alright, let's go. We can talk on the way. Hi. अबे उनका जो जायो है ना, मेरे फ्रेंड में भाई वो, उसके साथ अभी कुछ दिन पहले ही खेला था कॉम्पियर, वो हग रहा था भाई। अबे मेरा गेम ग्लिच हो गया। हेलो, मेरा गेम ग्लिच हो गया? नहीं भाई, मेरे फ्रेंड लिस्ट में सब ऑफलाइन चले गए। गेम ग्लिच नहीं है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे यार Go for a leisurely stroll. Huh. Do adventurers often go to places like this? Huh. I guess so. So, this is where you always meet your wife in your dreams? Yes, for the most part. Our place is on the summit, just up ahead. When I saw her in my dreams, we didn't do anything but talk about ordinary, mundane topics. I'd tell her about our daughter, Haidar, and she always listened intently. She would also reminisce about the past with me, telling me interesting stories and cracking jokes. It feels like no matter how long we may chat, it's never enough. Sometimes, it's the little things in life that matter the most. This is the part I'm a little puzzled about. I'm very familiar with dreams, and normally, they lack logic and continuity. But you said she could remember what you had told her before, right? That's right. She always listened to me carefully in real life, and now, she's doing the same in my dreams. She always surprises me with some details from our lives in the real world. The fact that she can remember such things makes me feel like she's alive. Whoa, that's pretty weird. Well, dreams are kind of weird to begin with. However, the problem is that his dreams have too much structure and continuity. Most dreams are far more fragile than you can imagine. For example, a loud noise outside your window in the real world could cause your dream self to get loaded into and fired out of a big cannon. Another example. If you're thirsty in the real world, then you might find yourself trudging through a desert in your dream. But the appearance of your wife seems unusually stable and unaffected by any outside interference. Statistically, this should be extremely rare. I don't understand it either. But I have no reason to suspect or reject these dreams. They're too beautiful. But I still want to figure out the how and the why. These kind of dreams are novel to me as well. That's why I want to have a look at the scene your dreams have been taking place at. Let's go. Just think of it as a nice little hike to the top of the mountain.
speed. Well, he really wasn't kidding. This place definitely isn't safe. No matter. We'll just finish them quickly. Huh? Are you going to fight too? Of course. This is all part of our... Yeah, got it. I see everything. Hey. Grow. The scenery here is amazing! It also seems like a great spot for eating snacks and taking a nap. Paimon wouldn't mind spending some time here every day either. I've yet to see anything strange about this place. I do not plan to deny the power of longing. Such an intense but unquantifiable emotion could indeed have the power to organize dreams. His wife must be a really amazing person, huh? Wait, where'd he go? Oh, so you were waiting for me here? Well, guess what? I've brought someone amazing with me today. When the Dendro Archon said she wanted to come with me, I could hardly believe it. I'll bring Haidar once I'm more familiar with the way here. She's been telling me that she really misses you. Huh? What's wrong with him? There's nobody there. Wait, Minar. Don't go that way. It's dangerous. Uh-oh, he's gonna fall! Catch him! Luckily he didn't fall. But what was all that rambling about? He also looks like he's passed out. He's in a dream now. What he said just now matches almost perfectly with the dreams he's described to us earlier. Oh, so he fell asleep and started to have the same dream. I find it a little strange as well, but we mustn't awaken someone while they're sleepwalking. All we can do is sit here and wait. Huh? Minar. Where's Minar? Oh, good! You're finally awake! What happened? Huh? Sleepwalking? Oh, right. It was all just a dream. The moment I reached the summit, I saw my wife, Minar, sitting there, and walked over to her. After I introduced her to you, she seemed a little flustered and started walking away. I told her to stop because of the cliff, and then she seemed to suddenly disappear. A strong wind started to blow around me and the sky grew dark. When I realized something wasn't right, I woke up. That sounds pretty wild. I don't think so. I slept a lot yesterday. Maybe we've affected the way his subconscious constructs dreams by following him here. Anyway, all that matters is that you woke up safe and sound. I think I know what happened now. I'm sorry. If it weren't for you, I would have fallen. Let's head back now. Don't come back to this place again for the time being. Oh. Nahida, what's on your mind? Paimon's a little worried now. We still don't have enough evidence to work off of, so it's hard to draw any reliable conclusions yet. But I'm concerned that Ilmon's case may not be unique to him. Oh, right! Come to think of it, there were lots of people from the event who had vivid memories of their dreams. Right. And not only at a moment of dreams,
There may be people like this all across Sumeru. We need to understand what's happening and the rate of its development as soon as possible. Then there's no time to lose. Let's head back. Stop standing there, Ilman. Let's go. चेक करेगा पहले. मेरे कॉल सुन लिया ना तो तुम लोग हमेशा जीतोगे भाई. और मैं हमेशा बता डिसमिस करने की कोशिश करता हूँ. वो टीपीएस से मैं लिया भाई. Rhea throwing, please report. I created. अबे नाइफ सिर्फ कुछ ही सिचुएशन में था. चल बे. अबे मेरी फेवरेट स्किन है भाई. मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ. We're out, and we're at an inn or. This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave an emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. He wants to change the past? But surely that's impossible! Right! You can't just rewrite history! All that stuff happened already in real life! It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it! So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Yeah. Paimon can't help... Paimon's... Huh? Mark, Yoru, mark where? Sorry. Paimon accidentally... Check bath, bro. Yes. It's Penelope's fault for causing Paimon all this mental stress, but erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Uh-oh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever
really succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Don't हग्गू please. नहीं हग्गू मेरी सेंटिनल से उस पे भाई. देखा भाई ने. There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried, so इधर आ रिवर दे रहा मैं देखो. ये गरीब. All right, Paimon will start. First dish. Munchkin grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes. Cream stew. Sauteed matsu Andrean chili chicken. Almond tofu. Satisfying also Adeptus Temptation golden shrimp balls, triple layered consomme, lotus seed and bird egg soup. बाहर क्यों नहीं हुआ? What was Paimon supposed to be doing just now? They are throwing, please report. Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. खाने वाला बता. What was it again? The balladeer? Is that a food too? तू सब छोड़ तू एल्बो में जा मेरी सेंटेंस पढ़ी. Weird name though. Just throwing bro, that's all bro. दोनों यही हैं. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the balladeer. Is that someone's name? Cause it sounds like a nickname or something. वो लोग जीत गए क्या? अरे Okay, sure. Where are we going? ज़ल्टान देना. Fine by Paimon, but is everything okay? वो पढ़ी है जल्दी ले. आई ये. इसने मैटर किया क्या? अपनी बात भी कर रहा है तू. मेरे पे डाल दिया नेट बंदे ने भाई. May the glory of the Prinzessin bring light to this world. ईश. अबे उनका रेस मेरे फ्रेंड में भाई. हग्गू है मार दो. फ्रेंड में मेरे खाओ. बॉट है वो. मार दो भाई. Oh my god. Yoru outplaying guys. TP. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Yoru TP bro. You dead bro. Sheesh. Aye. Nice save bro. Yoru, teach me save please. Teach me save bro. तुम लोग नहीं लेते क्या skins bro? तुम लोग क्यों नहीं लेते थे skins? Ah, it's been a while. Of course. Go ahead. तुम लोग क्यों नहीं लेते थे skins? Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Aminoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans
was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another, as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma you are so bored, and took up the mantle of the Ishin art. I wanna learn how you Now, bought like that. Oh, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh, yeah, we were! Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Yes, bro. Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, I give you VP, okay? dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, I give you and 1000 grew up VP, bro. deeply resentful at the world. Look. In his heart, Bot, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan, which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. चेंज किया था ना क्या? अबे नहीं मैं पासवर्ड फिर रुक जा वो बंदा ऑनलाइन है भाई. नहीं जो जिसने मेरा अकाउंट हैक किया था ना उसका दोस्त.
हाँ भाई Kazuha? कॉम्पी Why, yes. कॉम्पी 43 Just yesterday, in भाई fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? On to the next stop. It's going to be interesting adventure. हाँ नहीं आएगा वो किस्मत और इंस्टिंक्ट कॉम्पी 43 में वो तो खेल ही नहीं रहा ना अभी तू हटाओ मन नहीं कर रहा यार वेलो हाँ भाई वेलो मन ही नहीं कर रहा अभी मैं जा रहा आरडीआर कुछ खेलूंगा भाई या हेलो ब्रो हेलो अबे ये तो यहाँ का है भी नहीं I created another universe. हेलो ब्रो राइस केक ब्रो हेलो हाय खेल लेंगे तो इंस्टॉल तो कर पहले अबे हाँ खेलेंगे इंस्टॉल कर लिया We're here. रुक जाए Traveler, it's been a while. If you're looking for the commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? एक काम कर डिस्कॉर्ड आ भाई तू The commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's behalf. As for the commissioner himself... So pretty much business as usual on the Yashiro Commission. Very much so. Well, got any more questions? You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a... I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them, and the commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, they say it's because Toma is a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. How? You stream kar.
स्क्रीन शेयर करना, मैं शाय लेके आता। Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet so in the future, if you ever do have the time. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. Of course. All right, goodbye for now. We're great. Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see you. All right then. कर दिया। Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. हाँ इधर देख ऑप्टिफाइन ऊपर कर, ऑप्टिफाइन में ऊपर नहीं है, नहीं ऊपर ही ऊपर टॉप कर। हाँ ठीक है, ऑप्टिफाइन हाँ 1.19.2 कर ले। ये ना अभी सुन, रुक 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 रुक, वो पहले वेबसाइट खोल, क्रोम खोल, पहले क्रोम खोल और ये टी लॉन्चर सर्च कर। इसकी वेबसाइट पे जा, वो साइन अप है ना नीचे, जा साइन अप और अकाउंट बना ले। लॉगिन में तेरा यूजर नेम जाएगा, ठीक है, जो भी तेरे को इन गेम यूजर नेम। अबे मेरा था एक अकाउंट पहले टी लॉन्चर पे। हाँ तो देख लॉगिन करके तेरे को ईमेल पता है किस जिस पे था? ईमेल पता है, पासवर्ड नहीं पता। हाँ तो इधर लॉगिन राइट में ऊपर देख, ऊपर 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 ऊपर, हाँ लेफ्ट में, वहीं पे देख तेरे माउस नहीं जहाँ पे माउस रखा था नीचे इंग्लिश है ना, उसी के लेफ्ट में। हाँ लॉगिन जा, इधर डाल, नहीं नीचे रीसेट पासवर्ड पे जा। अरे मिस्त्री मेल डाल। हाँ बोल। ऑफिशियल का सेट क्या है? डिपेंड करता है कैसे यूज करेगा उसको। 80 के बिल्ड करना है ना। सपोर्ट नहीं चाहिए। सपोर्ट में क्या एनर्जी रिचार्ज देना पड़ेगा क्या? नहीं आ रहा है क्या? अरे तो फिर बना ले वापस, ना बना ले, वैसे भी माइनक्राफ्ट अकाउंट में वो नहीं रहता ना। भाई ये लड़की बहुत बेइज्जती करती है मेरी। भाई सिखाया किसने? सुन लॉगिन में ना तो वो जो भी तेरे को यूजर नेम रखना है ना वो डाल दे। हाँ अभी तेरे को कैसा सब डीपीएस करना है, डीपीएस करना रे? अरे वैसे तो मैं सपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, उसका ई और ये अल्ट यूज करता है खाली, कंटिन्यूस चार्ज अटैक देता है ना पायरो पे। हाँ तो उसके लिए यूज करता मैं उसको। तो इलेक्ट्रो सब डीपीएस यूज करेगा उसको। हाँ तो 4 पीस थंडरिंग फ्यूरी देते, सिंपल बे। थंडर हाँ वही पूछ रहा था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था उसका। या तो 4 पीस थंडरिंग फ्यूरी देते, या तो 2 पीस थंडरिंग फ्यूरी और 2 पीस ये ब्लिजार्ड, नहीं यार ग्लैडिएटर्स फिनाले। और वेपन कौन सा दे रहा उसको? रस्ट है। रस्ट मत दे बे। तो तेरे पास स्ट्रिंगलेस है? नहीं। स्ट्रिंगलेस बेस्ट है भाई उसके लिए। स्लिंग शॉट है? स्लिंग शॉट रहेगा। नहीं वो बेकार रहेगा, चल दे। कोई भी तेरे पास वो नहीं है क्या एलिमेंटल मास्टरी वाला? ओ कोई बोला क्या? हेलो। हाँ लॉरी आई ना। ये क्या है उतर है? सबको सुनाई देता है, बस तुमको नहीं। भाग यहाँ से। ये वापस साइन अप दबा दबा दबा। सैक्रिफिशियल बोए पे एनर्जी रिचार्ज मास्टरी बता रहा है। पेज रिफ्रेश कर ले। कंटिन्यू कर दे कंटिन्यू कर दे। क्या रे बोरी, कॉलेज से बंक मार के घूम रही है सुनने में आया।
मैंने कब बोला ऐसे? अबे ये क्यों आ रहा है यार? एक काम कर, ये ऊपर टी लॉन्चर लिखा है ना, पर लेफ्ट वाला, हाँ इसको दबा। वापस इधर राइट साइड में साइन अप आया देख, लॉगिन के लेफ्ट में। हाँ वापस जाओ और इधर वापस फिल कर। हाँ वो तेरा वो ग्लिच हो गया था, आई एम नॉट अ रोबोट है ना नीचे। अरे 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 ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, अंदर की बात है ब्रो। ये कूजो सारा को फाउनियस वॉर को दिया है एनर्जी रिचार्ज का, वो दे दूं क्या इसको? वो सेव कर ले ऊपर। क्या कुजो सारा को क्या दिया है? फाउनियस। पर वो तो एनर्जी रिचार्ज है ना। हाँ मास्टर नहीं है। दे सकता है। अब इधर सेलेक्ट फाइल मत कर, को स्किन चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही खेलूंगा। स्किन डाल लेगा तो सही रहता है, बट ठीक है। अभी अभी वापस जाओ उस पे, टी लॉन्चर पे जाओ, ये बंद कर दे। बस ये याद रखना। हाँ नीचे नीचे अकाउंट्स है ना, वो दबा। नहीं 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 इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, अकाउंट्स दिखा है नीचे, उसके जस्ट नीचे टिक कर उस पे। अभी वापस क्लिक कर कॉन्फ़िगर अकाउंट। नहीं नहीं देख, हाँ अभी ऊपर सबसे ऊपर, हाँ इधर यूजर नेम जो बनाया था वो डाल, और सबसे नीचे जो डॉट डॉट है ना उधर पासवर्ड डाल। अच्छा अभी सेव एन अकाउंट। हाँ अभी ऊपर वो छोटा सा एरो, बैक एरो बना है ना, हाँ अभी कर इंस्टॉल। यही ना? हाँ 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 अभी बस कुछ नहीं करना, तेरे को हमेशा टी लॉन्चर खोलना है और ओपन करना है, ठीक है? तब तक तेरे को अगर स्किन रखना तो स्किन रख सकता है तू अपने नहीं, स्किन कैरेक्टर नहीं का। चाहिए। वो भाई स्किन मिलता है। क्या हुआ? बफ नहीं चाहिए क्या? स्किन बफ इम्बॉट। नहीं 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 नहीं, वालों में चलेगा। काश काश भाई वैलो। अरे कहाँ गई भाई, रुक जा वापस बुला दे इसको। ए वापस आ रही, ए बेंचोद वापस आ रही है। ए वापस आ रही। वो बीच में I का शब्द भूल created गया another क्या? universe and founded paradise. For I, Fischl. पिमशल पर आए Another पिमशल। universe. हाँ चल तू अबे मारो। ग्रूट, हाँ, बोलना। ए छोटी को बता दे तो भाई, मेरे जान खाती रहती, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता बता क्या हुआ करती रहती है। कौन? छोटी और कौन? रद्दी। वो आई है क्या अभी? नहीं नहीं कल कर रही थी जब तू पानी भरने गया था। अच्छा बताएंगे बताएंगे। क्यों बाद में भाई, क्यों बाद में? सर्वर का इंतजाम करता भाई। सर्वर चालू है ना? अबे नहीं, हम लोग सोच रहे थे एक छोटा सा ऐसी प्राइवेट सर्वर बना लेते हैं। कौन तुम लोग पे बेंचो? अरे 2-4 दोस्त लोग हैं वैलो के और मैं। अबे तो तेरा बड़ा सर्वर है ना, तो उसमें बुला लेना। अरे मेरे को खुद के सर्वर में खेलने में क्या मजा, और वैसे भी हम लोग वनीला सर्वर बनाएंगे ना। लाओ ले। वलीला वलीना सर्वर। तो अभी तेरे सर्वर में ज्वाइन करो या सर्वर बना रहे तुम लोग? तो ये टंगा नहीं है क्या? रुक मैं आ रहा हूँ। भाई Sure, the Kamisato clan will be fine.
before the trip. Baby, for the 2000 lesson. इसको HP कितना है? I created another universe and found. Paradise. Solidify! No, my sword! Oz, reveal thyself! Gather! Stabilize! Order guide! No rest for the wicked. Wings of darkness! Come, sever night from day! Crush! Solidify! Rain outlines your fate. Beg for mercy. I condemn you!
What trinkets lie veiled within this desolate plain? Achievement खुल गया. Why? ये लैग क्यों है? I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. Stabilize! I will have order! Shudder! More speed. Solidify! Rain outlines your fate. By royal decree. Shadow Raven, let night fall. I summon thee. Crush. The hunter becomes the hunted. You're open. Another test subject. Stabilize. Order guide. Know my sword. Oz, reveal thyself. No rest for the wicked. Beg for mercy. Should replace my hammer. Shudder. Picked the wrong test subject. Solidify! I will have order! Beg for mercy. By royal decree. Touché. Rain outlines your fate. Crush. Oz, reveal thyself. Shudder.
कौन सा जरूर? रुक जाओ। रुक गया मैं आ रहा। मम्मी अरे मिस्त्री, ये इसका ट्रायल देखा कि तूने? किसका? बलाडियर वंडर आर एनिमो जो आया ना, देखेगा क्या? देखा। इधर इधर ओह, मुझे उसको बाल्डीर या फिर स्कारमूशा नाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उन लोगों ने ऐसा बनाया है कि ना, तू बाल्डीर या स्कारमूशा नाम देगा ना तो वो मना कर देगा, बोलता है मेरे को ऐसे नाम नहीं चाहिए। देख रहा है इसका, ये देख रहा आउटफिट देख रहा। विजन बदल गया बंदे का भाई पूरा। वो क्यों बदला? वो स्टोरी खेलना पड़ेगा तुझे। हाँ। ये ई होल्ड है उसका, ठीक है? अबे उड़ रहा है ये। हाँ अबे कैटलिस्ट है, ठीक है? ई होल्ड है उसका, ठीक है? अभी अल्ट देख तू भाई, लगता है पुल करना पड़ेगा। Wind rises. वो उड़ने का भी बाहर है, देखा उसको? अबे ये तो Know your place. ठीक है भाई, इसका डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। भाई डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। अबे भाई क्या नाम है इसका? सस्ता काजू है वे। सस्ता काजू? काजू अभी तो Bow your head. अबे प्लंज नहीं करता क्या? प्लंज कर, ई होल्ड करके प्लंज कर। The wind rises. ई दबा। अटैक्स देख रहा है इसके? ई दबा। Swallow fury. ई दबा वापस। अच्छा कैंसिल हो जाता है। हाय रुक जा भाई, वापस डाउनलोड कर रहा हूँ। कितना साइज कितना है? अभी बढ़ गया रहेगा, पता नहीं होता। मुझे कुछ थकात हटाना पड़ेगा। अबे हाँ भी मैंने आउटलास्ट नहीं हटाया ना अभी। अबे डबल टैप किया ना तो क्रॉस भेजता है, और घंटी बजती भाई ऊपर। उड़ता है साला, उड़ता है पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। अल्ट भी ओपी है। वो दूसरी एनिमो मेरे को इतना खास नहीं लगी, पोस्टार। तो ये तो समझ रहा मैं तेरी तकलीफ। ये तो ओवर पावर। मल्टीपल हिट्स तो अरे इसका ये देखना चाहिए था, अटैक फॉर्मेशन देखना चाहिए।
काम करना, मैं क्यों डाउनलोड करूँ, तू मेरा अकाउंट लॉगिन करके पुल कर दे। क्या पुल करना है तेरे को? सारा मूशा भाई, मैं नहीं डाउनलोड कर रहा भाई इतना बड़ा जबरदस्ती एक कैरेक्टर वापस खेलने के लिए। बिल्ड बाद में करूँगा जब मेरा मन करेगा। भेज तेरे पास ऑलरेडी रहेगा ना भाई। More speed. भेज दे लवड़ू। भूल गया मैं पासवर्ड शायद, देख डाल के देख। ए देवांग हेलो। हाँ बोल ना। तू तो साइलेंट क्यों बैठा है भाई? मोन्टाज देख रहा था मैं। मोन्टाज? मेरे मोन्टाज देख ले। अच्छा टाइम पास है तो बता। अबे मेरे डिस्कॉर्ड के प्रोफाइल में जाना, उधर यूट्यूब मेरा लिंक रहेगा। रुक जा, भर के प्रीमोजेम्स है अभी, खाली रुक जा। नहीं बे ज्यादा नहीं रहेगा ना, मैंने 1100 प्रीमोजेम्स मिलेगा ना अभी, 1100 से ऊपर मिलेगा शायद तेरे को। क्या बात कर रहा है? हाय मेरे को, क्योंकि मेल पे तो मेरे को 1100 प्रीमोज मिलेगा है। मेरे को लगता है मैंने ऑलरेडी पहले के कलेक्ट किए थे। ये क्या है? क्या बता, मैं शायद पुल किया था। पुल किया था, मैं टाइम पास किया था भाई। अच्छा। या फिर से तो हैक नहीं हो गया? ओ भाई ठीक है भाई, कर अबे क्लेम ऑल कर भाई, क्या कर रहा है? ओ भाई इस कारामूशा मेरा है बे। दबाओ, सब कलेक्ट कर ले। सब कलेक्ट कर ले? हाँ कर ले। ओ भाई अबे और वो भी खेल ले, क्या बोलते हैं, टेस्ट रन भी खेल ले। और फ्रेंड्स छोड़ दे, वो छोड़ दे। टेस्ट रन खेल ले। और कोई सा क्विक इवेंट है क्या कब से करके जो आ जाएगा? अबे मेरा स्टेलर रीयूनियन वापस आ गया। जमाओ, स्टेलर रीयूनियन में भी मिला रहेगा ना, देखना वो देख। ये छोड़ दे और देखना नीचे रिवॉर्ड। हाय ये अबे छोटे छोड़ रहे हैं, टेस्ट रन कर ले। टेस्ट रन कर लूं? हाँ उधर थोड़े कर ले। हाय ये भाई साले तूने क्या डाला मोटा से? हैं? अपने मरने का क्लिप डाला तूने मोटा से। तो क्या हुआ भाई, सिर्फ एक ही चीज डालने से थोड़ा सा कॉमन हो जाता है ब्रो। कितना रैम है? You dare to gaze upon me? Too slow. कम कर सकता है, कम कर। क्यों? लैपटॉप पे खेलता हूँ भाई। Nice and spicy. अरे गधे, कौन है तू? Bow your head. देख रैम देना मतलब जिस सर्वर को कितना रैम मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा सर्वर को रैम मिलेगा ना उतना कम लैग होगा। जितना कम रैम दूंगा ना सर्वर को उतना ज्यादा लैग होगा। मेरा रैम कुछ नहीं जाएगा, तो मेरा रैम जाएगा। और मेरे पास तो 32 GB है। Cry louder. भाई मजा आई मेरे को ये कैरेक्टर खेलने का।
बे भाई, अरे यार मेरे को अब भी याद आया, मैं इतना नाटक क्यों कर रहा हूँ भाई। फेदर क्लाइंट मेरे को दे रहा ना फुक्कट का सर्वर बना के। सारा जगह छट के मैं तेनू लिया भूलिया मैं का भरोसा नहीं। ए मम्मी 5 मिनट में सर्वर का नाम क्या डालूं? सुन मैं आया 5 मिनट में। पहले तो ये बता के जाऊंगा सर्वर का नाम क्या डालूं। कुछ भी लिख दो। मैं आया 5 मिनट में, ठीक है। Can't catch me. Oh, coming through. Go. Hey, that wasn't right. Let's roll. Can't catch me. Who wants some of this? ओनी भी ठीक है रे, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है। ओनी फैंटम नहीं, ये झाटू। अब वो दूसरा 4 स्टार कैरेक्टर देखना है मिस्टर, ये वाला फारूजान। एक सेकंड ना, अबे 4 स्टार मत खेलना। ठीक है ना, 4 स्टार में थोड़ी प्रीमियम मिलता है। नया कैरेक्टर तो देखो फारूजान। कहाँ से बच्चे लेके आते हुए किडनैप कर। लॉली है क्या ये? हाँ नहीं भाई, लॉली कहाँ दिख रही है? तो बच्चा बोला कि लॉली है भाई। प्लीज सर्वर लेट्स गो, एक्सेप्ट माय too late for regrets. We'll see about that. Have fun with this gift. Dare to mess with me? Ears of the storm. We'll see about that. Dare to mess with me? Truth repeats its course. इससे अच्छा तो हेजो है भाई। ये देख 19,000 ई होल। Hurts. 26,000 ई होल। वाह भाई। We'll see about that. Ears of the storm. वो अच्छा 4 स्टार था भाई, जो सो जाता था मालूम। हाँ भाई, सील ओपन करके सो जाता भाई, तुम झाड़ रहा कुछ नहीं। उसको तो ना झोंगली से भी ज्यादा अपने शील्ड पे एटीट्यूड था। वो जो सो जाती थी वो। अबे हाँ भाई, सो जाती शील्ड लगा के। बता किधर पुल करो जाते हैं। कर जा, जगह ढूंढने दे पहले। सोचने दे रे, रुक जा।
और कितना 20 पुल कर रहा है? हाँ कर ले 20-30 पुल कर ले। काम कर। नहीं तो मैं तो ये भी देखूंगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बे। वो जा एबिस के पास जा। यहाँ पे? हाँ हाँ और ना साइड से ऊपर जाके वो ले, पहले लेफ्ट साइड जाके एनिमोग्राम ले। लेफ्ट साइड जा। हाँ उधर जा। हाँ हाँ उधर जा, उधर एनिमोग्राम मिलेगा देखो। उससे पहले विंड करंट बना। कहाँ है एनिमो कांड? वो है ये क्या? ये क्या? ये ले हाउ उड़ और उसके ऊपर जाए एपिस पोर्टल के ऊपर जा। टॉप पे करेगा। मैं आता जरा सा हिला भाई, जरा सा। क्या गया बोल। पार्टी सही है बस। पार्टी तू रख ले जैसा देखो रखता है। नहीं भाई तुम दूसरे। Freeze! You're in for a little shock. Blitz. कन्वर्ट करो या डायरेक्ट 10 मारो? डायरेक्ट 10 मार बे, कन्वर्ट नहीं करते हम। और स्टार नहीं देखते भाई हम। और 10 लेट्स गो। फोर स्टार फिक्स है भाई। ये छी भाई मेरा। अबे मेरा वो है भाई ऑलरेडी C6 है। भाई फालतू। 2 करो। छी भाई क्यों और पुल करो। 2 करो दे दिया भाई। गोल्ड क्यों नहीं आ रहा? अबे तो मेरा पिटी कितना 0 था बे। ये बोलेगा कौन बंचो? नहीं होगा। रुक वो कन्वर्ट कर, उसमें जा, शॉप में जा और ये खरीद ले। वो देखना। नहीं वो स्टारडस्ट। हाउ ये ले 5। वो भी 5 ले ले। ये हाउ ये भी 5 ले। हाँ ले ले। ये अभी मत ले। ये एक ले ले। हाँ चल ठीक है। अभी 10 पुल मार। 10 पुल मारना। एक पुल मार। नहीं भाई सही बॉक्स हो गया। हाँ ठीक है भाई, उम्मीद भी नहीं थी मुझे। तेरे नसीब में एक पुल मार ले। हो गई तेरी पीटी बिल्ड आ गई। ठीक है 40 ले। 40 हो गई ना। 40 पुल मारे ना। 40 पुल मारे और ये 3 किया है। 43। हिस्ट्री में अभी आएगा ही नहीं, टाइम लगेगा।
और टाइम कितना है इसको? 14 दिन ब्रो। 14 days। 14 दिन है। ठीक है भाई, गुरु ये इसको लेके जाऊंगा मैं। इस पे इतने प्रीमोस बर्बाद किए ना। वो गधी नहीं मिली भाई, सब मिल गया मेरे को। देख रहा है, ये किस्मत है मेरी ओपी। अबे सब पे वो लगा दे, वो गोरो का मिला ना कॉन्स्टलेशन, वो लगा दे। आधा करो। सारे लगा ब्रो। गोरो है किस काम कर रहे थे? जियो बाबू। पर 4 स्टैक जियो पे ही वो होता है भाई। और बंदे ने बिल्ड किया टैलेंट पर आज। अब बोला ना भाई, मेरी नॉन बिल्डिंग वांग 60,000 देती है भाई अल्टी पे। ये चाहिए। देख नीलो भी है ऊपर। अरे उसको छोड़, मेरे को ये चाहिए। अबे ये डीलो के आगे कौन है भाई? ये भी नहीं मिलेगा। तो मेरा अकाउंट खोलेगा ना, तू सारे कैरेक्टर देख के बोलेगा अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं कि मैं सिर्फ कैरेक्टर कलेक्ट किया हूँ भाई। मैं सिर्फ कलेक्ट किया हूँ भाई। ये तो है, ये आने वाली है। चीचियाँ क्या सीखेगा देखने को जरा। एक्सपेक्टेड C4 C5 था रे फेज 3। क्या मजे ले रहा तू? चांटे मारूं तेरे को भी? हैं? बहुत बज रहा ना नहीं तू? नहीं, बहुत बज रहा नहीं तू। जिनवा पे क्या किया? जिनवा पे कुछ नहीं किया। ये DPS है ना, सब DPS है जी। हाँ क्या DPS है? सब DPS है। कौन बे? जीन? हाँ सब DPS है। नहीं तो DPS भी बना सकता है पर। ये गेम याद है ना? ये गेम याद है ना? हाँ भाई मजा आई थी भाई ये गेम। फोरजा। गुंजा भाई बर्तन बोले, ये छोटी हीला। शेने का माल मसाला इसके अंदर। इसका पप्पा शेने का था। हाँ या फिर मम्मी गई थी। आंट भाई बार ये बार कदे रेजर ही है। उसके बाद नीलो इसको पुल करके भाव भी नहीं दे रहा भाई। वो देख दुख में नाच रही भाई। कंगन बजा रही है। उसको बिल्ड भी नहीं किया ना तुम। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या दिया भाई? लेवल 20 है बे। ये भी एसपी बिल्ड है क्या? आओ सब चूहा चुटकी बिगाड़ी। Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for... ये निशा ये क्या खेल रहे थे तुम लोग अभी? अभी कुछ नहीं खेल रहा। ये चेकिंग करती हो? माइनक्राफ्ट खेल रहा था ना तू? तो आई ये
तेरा भाई पीसी पे होस्ट करके मेरा जो प्रोजेक्ट क्रिस्टल वाला वो है ना आईपी उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। हेलो हेलो भाई, टाइमिंग भाई। क्या हो अब गया? भी मैंने सर्वर कंप्लीट किया ब्रो। क्या मैं क्या कैसे ज्वाइन करूं? रुको मैं ग्रुप आईपी डाल दे रहा हूँ। तेरे को भी दूं क्या रे ग्रूट? देना मेरे को लौड़े, तुम्हें क्या तुम्हारा मुंह देख के बैठू क्या? अबे हाँ। टी लॉन्चर 2.18 आ रहा है भाई, अपडेट करो क्या? कर ले, अपडेट तो ऑटोमेटिक होगा ना। नहीं ये मेरे को बता रहा भाई, अपडेट करो तो लौड़े तेरे बाप के नौकर नहीं है सब लोग। भेज दिया क्या? मेरे पास भाई वो पड़ा हुआ था डोमेन, मैंने उसी पे मार दिया होस्ट। This version has been updated on the server. It's strongly recommended to play PSU. अरे हाँ भाई। ग्रूट 19.2 है ना? और नहीं, मेरे पास 1.19.2 है। हैं? हाँ क्या बोल रहा है? 1.19.2 है। 2 ही है? नहीं तो 1.19.2 है। तेरा 1.19.2 के बाद आवाज कट जा रहा है। मैं बोला मेरा 1.19.2 ही है। 2 ही है ना? हाँ ठीक है, करो ज्वाइन करो, घटिया वर्ल्ड पर ज्वाइन करो। कैसे करूं ज्वाइन? मल्टीप्लेयर ना? हाँ मल्टीप्लेयर पे जा, ठीक नीचे ऐड सर्वर लिखा रहेगा। ये क्या है? क्वेश्चन थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्ले, क्वेश्चन ऑनलाइन हाँ प्ले उसको डू नॉट शो अगेन करके प्रोसीड कर दे। ठीक है, अब नीचे ऐड सर्वर लिखा है, यस ऐड सर्वर पे जा, सर्वर नेम पे तू कुछ भी डाल सकता है। ये मेरे को एक सेकंड, विंडोज डिफेंडर का ये मांग रहा है, एक्सेस मांग रहा है, दे दूं? दे कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई मत दे, तेरा बैंक अकाउंट खाली होएगा। हाँ भाई विंडोज डिफेंडर तेरा बैंक अकाउंट खाली करेगा, गधा मत डरा भाई। क्या 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 बता सर? जेबॉस सॉस पे एक बार क्लिक कर और जो भी डालना है डाल ले तू, सर्वर नेम तेरा ऊपर है, ठीक है, कस्टम है वो। नीचे जो सर्वर एड्रेस है ना उधर देख, मैंने ग्रुप पे डाला है माइनक्राफ्ट लिखा, और उसके ऊपर जो smp.projectcrystals.com है ना उसको कॉपी पेस्ट मार दे सर्वर एड्रेस पे। किधर भी? ग्रुप पे देख मैंने डाला है माइनक्राफ्ट के ऊपर जो टेक्स्ट है ना smp.projectcrystals.com, उसको कॉपी मार पूरा और प्रोजेक्ट क्रिस्टल ये सर्वर एड्रेस पे पेस्ट कर दे। Sophie and reality is so Sophie कौन सा ग्रुप? अरे माइनक्राफ्ट के ऊपर है ना, ग्रुप चैट पे देखना डिस्कॉर्ड के। अरे इसका नाम क्या है वो तो पता, मोबाइल कौन सा है भाई, किधर डाला तुमने वो बता दो उसको। एनएच के क्या? नहीं कांट कनेक्ट टू सर्वर आ रहा है कहाँ? हाँ वो ज्वाइन कर ले, वो ज्वाइन हो जाएगा, वो मत देख भाई। फेल टू वेरीफाई भाई मेरे को मिला ही नहीं। अरे रुक जा, मैंने वो बंद करना भूल गया हूँ, रुक जा भाई। कैसे नहीं मिल रहा है? डिस्कॉर्ड का ग्रुप चैट नहीं है तू? डिस्कॉर्ड का ग्रुप चैट है ना? कौन से चैनल के? डिस्कॉर्ड का ग्रुप चैट है, जो ग्रुप चैट जो मैंने बनाया था। हाँ उधर जा। हाँ उधर गया। उधर क्या दिख रहा है लास्ट मैसेज तेरे को? हाँ अब भी आया। चल बे हट। अबे अब भी आया? हट। लिटरली मैंने अब भी देखा ब्रो, अब भी आया। भाई बहाने भाई, रुक जा ग्रुप ज्वाइन अभी नहीं कर पाएगा तू। वो बोला तेरी औकात नहीं। इधर कौन घिस रहा? अरे स्नूफी बताना कब ज्वाइन कर सकता हूँ? पटाटे मेरे को वो ऑनलाइन मोड ऑफ करने दे, एक सेकंड ना। लियो बना दे भाई स्पॉन पे मिस्त्री, ये वाले सर्वर। गधा। मैं बनाओ क्या? जा बे, बना ले, बनाना है तो, पर क्रिएटिव नहीं मिलेगा।
बहुत आराम है। इसलिए तो तेरे को बोला बना, वो बहन तो जाब है बोल। हो रहा है क्या चालू? एक सेकंड मेरे को उसका दो चार चीज करना है। बतारा उचिया हशिरामा संजय दत्त गधा वो सीन से देखा है उधर। चल बे बॉट आरिगातो गोजाइमासु यात्सुकनेते हिरेन गोदान। देखा है क्या वो संजय दत्त वाला? नहीं भाई मेरे को मिला तो भेजता मेरे को इंस्टा में। था तेरा भाई बनाएगा ना हशिरामा संजय दत्त का टैटू बदल करवा है। हो ज्वाइन हो जाओ अभी। ड्रग्स लेता था पहले हशिरामा संजय दत्त। पिंगिंग ही आ रहा है ना मेरे को। हाँ तो ज्वाइन होना भाई। ये जॉइनिंग वर्ल्ड। मेरे को चैट वाइट से ही कर दूं क्या बे? एसेंशियल्स डाल लूं क्या? डालना चैट को दिख रहा है क्योंकि सोच रहा हूं कम से कम जिंदगी सवार दूं एक ही गंड मार दूं दुनिया ही बदल जाए इसका बैल। आज ये किधर स्पॉन किया है मेरे को तूने? हुआ ना तो मैं कौन हूँ? कैसे दिखते हो? मैं कौन हूँ? ये मेरे स्किन को क्या हुआ? अच्छा यार क्रैक्ड है। अरे ये मेरे स्किन को क्या हो गया? अचानक से मेरे को किसी को याद आने लगी भाई ये स्किन को। भाई ये दिख गया बे तू बॉट। आ जाओ गाइस जुट्टू में आ जाओ जुट्टू में। ए तू क्यों नहीं आ पा रहा? अबे अपने को सीजर करना पड़ेगा। ए छोटू ज्वाइन कर लूं ज्वाइन। हाँ कर लेना बोल तो रहा हूँ। कांट कनेक्ट टू सर्वर। अरे तू ज्वाइन कर ले। ज्वाइन कर ले तू आईपी डाल ठीक है ओके कर और ज्वाइन कर ले। हाय ये मेरी 1 एचपी है भाई मेरे को रुक जा मारने दे। अबे ये तो मार रहे भाई मेरे को। हेलो चलो रात हो गई है ना भागो बचा लो। मर गया लेट्स गो भाई ये तो ज़ॉम्बी पे अरे ये रहा मिस्ट्री। अरे ये भूचो ग्रूट किधर गया बे तू? ये पानी में तेरा भाई एकदम किधर गया बे तू? तो मिनी मैप में भी नहीं दिख रहा। जाने दे भाई सवार है पीछे जाने दे। मैं निकल। अरे भाई कितना दूर गया बे तू? मैं पानी में हूँ। अबे इधर ही हूँ। मेरे को तो मिनी मैप पे दिख ही नहीं रहा। अबे पहाड़ से निकलो भाई। किधर है तू? तू किधर गया? इधर तेरे सामने। आ रहा म्यूजिक बढ़ा रहा। मार ले मेरे को मार ले। हाँ मार ले भाई मार ले। पहले तेरा इधर नहीं आ पाएंगे क्या? अंदर नहीं आ पाएंगे? नहीं पर तू हरकत करेगा तो जरूर आएंगे भाई। अबे मर जाऊंगा मैं। अबे तुम्हें अरे ये आ गया भाई। मॉन्स्टर हंटर लेट्स गो। क्रीपर आ रहा है भाग ले वहां से। वो तो ऊपर चढ़ गया बे। ये पटेगा क्रीपर। मैं भाग रहा भाई इधर से। अब इधर आजा मिस्ट्री इधर आजा। इधर कुछ नहीं है। हाँ तेरा मम्मी अबे इधर ऊपर आना। इधर ऊपर कुछ नहीं है।
ये भिंचू का एक्सप्लोजन ऑन है क्या? दूर रह भाई, मेरे पास मत आ, तू हर कहीं हाथ चलाता है। ग्रुप तू घूम किधर रहा है भाई? कौन? तू किधर घूम रहा है भाई अकेले? मैं? हाँ अपना ग्राइंडिंग चालू हो गया। ग्राइंडिंग चालू हो गया, पर तू कहाँ है भाई? कहाँ मर रहा है भाई तू? अरे ये देख आसमानी बॉल। तू नहीं दिख रहा मुझे मेरी मैप पे ब्रो। फैक्ट अबे आई एक हार्ट भाई मैं। फैक्ट आई भाई इधर और क्रीपर्स आ रहे हैं। ग्रूट ग्रूट ए 180 7 पे आ जा भाई। मरेगा तेरा भाई। मैं एक हार्ट हूँ भाई, कटका मरेगा। मरेगा ये, क्रीपर से मरेगा। अबे अचानक ये भिंचू ये सब देख आर्मर वार्मर पहन के आ गया। मर गए। दिख गया तू। एक रूट आ जा मेरे पीछे। एक रूट। यहाँ रुकना आ रहा। वो पेल भाई रहे मेरे पीछे आ रहे हैं ये लोग तो। और वो ये मार रहे। मैं तेरे पीछे हूँ। हाँ रुक जा इधर आ इधर इधर आ। आजा सीधा रुक जा वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। सीधा मेरे सामान उठा लेना। सामान क्या भाई, मेरे पीछे आ रहे हैं लोग। अबे पर ज्यादा सामान था नहीं, लकड़ी था। इधर इधर आ, नीचे आ रे। ए छोटू नीचे रे। तो पीछे देख, भूत है। भाई ये चिपकन मिला भाई। ये वो ले उधर आइलैंड पे चलो, आ जाओ। कैसे थ्रो कैसे करते हैं? थ्रो मत करा ना, आ जाओ पीछे। कौन सा आइलैंड पे? अच्छा वो सामने वाले। दे भाई अबे पानी में उधर वो बत्ती चल रही मिस्त्री। उधर बत्ती चल रही है। किस साइड? सामने विलेज दिख रहा है। मेरे को रुक जरा तुम्हारे को लोकेशन अबे है। हाँ, दिख रहा विलेज है। लेट्स गो भाई, इतनी स्पीड बोलते हैं। वहां पे स्पॉन पॉइंट लगा झंझट ही नहीं फिर। अबे वहां पे और कुछ भी दिख रहा है मेरे को शायद। नहीं भाई इधर शार्क वार्क नहीं आता। अच्छा राफ्ट है क्या ये गधे? बहुत दिन के बाद ही माइनक्राफ्ट खेल रहा शेडर। अरे मैया ये ठीक है। किधर स्पॉन हुआ मैं? अच्छा उधर ही स्पॉन हुआ। किधर गया तू? मेरा सामान रुक गया। मैं विलेज साइड आ गया। इधर तेरे सीधे आ जा। आ रहा ग्रुप में तेरे को कॉर्ड्स दे रहा हूं, तू जल्दी नहीं आ जाना। मेरे को पता है, मेरे को दिख गया विलेज। चाड़र वाट अभी इधर सलीम है। क्या बात कर रहा है? हाँ ओ भाई बायो ओबी अच्छा काम निकला भाई ये। विलेज जाना रे छोटू, क्या नाच रहा है पे? जा रहा हूँ। तेरा भाई तेर के नहीं, तेरा भाई चल के आएगा। इतना ज्यादा क्यों आ रहा है बे अपना? ठीक है अभी। अच्छा मछली है भाई, मेरे को बोट लगी। भाई ये बोट है भाई, बैठ जा उस पे। एक साइड का पानी बरसीला हो गया भाई। तेरा भाई चल के आएगा। अबे टॉर्च को ये कैसे करते हैं? लिट कैसे करते हैं टॉर्च को? बस लगा दे। ये उठो रे, सो के या भाई। चल तेरे भाई को बटाटा मिल गया। हाँ तुम्हारा गाँव लूटेगा मुझे। पानी मिला रे। वाह रे पानी मिला। अटक गया मैं। वाह एक घर में दो जन क्या कर रहे थे? ये मत तो ये बेल मिली भाई बहुत सारी। अच्छा एफपीएस दे रहा 74। क्यों क्यों इतना अच्छा एफपीएस दे रहा? क्योंकि ये मेरा सर्वर है भाई। बेड भी ले लूंगा भाई, बेड भी ले लूंगा, सब ले लूंगा। क्योंकि मेरे नॉन ग्राफिक कार्ड पीसी पे स्ट्रीम हो रहा है। क्या कर रहे भाई? कैन नॉट विलेज भाई, सच सेक्सी नहीं है हमारा। ठीक है तेरा भांग दूसरा तेरे भाई को मिला इधर ब्रीवल, ठीक है ना? तो
पे विलेज पे ही बेस बनाना है कि कहीं और जाना है? हैं? विलेज पे मेरे को base एक बनाना चीज है? बता पहली बात, हाँ। अपने को दोनों को लड़के का कैरेक्टर क्यों मिला है? अबे ठीक है ना, मैं तो अभी थोड़ा सा खेल ले, मैं बाद में ना इसमें वो स्किन रिस्टोर और वगैरह डाल दूंगा। अबे तो क्या सीजर करने गए क्या अपने को? हाँ भाई। लौड़े। हाँ भाई आजा आजा, तू आ भाई। मैं जुगतू तो फोड़ ले भाई। ग्राइंड करो ब्रो, ग्राइंड करो ग्राइंड करो। अबे ये इधर ही बेस बनाते हैं अपन। अरे ये लोखंड। हाँ अरे नहीं 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 आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना। आओ। अबे कितना है भाई यहाँ पे, खाने की कमी नहीं भाई 2 दिन तक। खाना चाहिए भाई, वो कैसे कर सकते? मिस्त्री नहीं, हट जा भड़वे, हट जा, ये मेरा मटेरियल है। उसको देखना, वो भी तो मार रहा ना तेरे को। नहीं ना भाई कितना मिला? 4 मिला। आजा 2 ले ले तू। क्या? 2 ले ले। नहीं तो 2 का क्या करूँगा? पिकेक्स बनाना गधे। सब लोग घर में रह रहे हैं उनको। मर गया ना वो सेट कर लो रिस्पॉन यहाँ पे, वरना मरोगे ना तो फिर फड़फड़ाते रहना। क्या करना है इधर? रिस्पॉन सेट कर लेना। बेड पे एक बार राइट क्लिक कर ले, कोई भी बेड दिखेगा ना उस पे एक बार राइट क्लिक कर ले। ए चलो ना, भागो यहाँ से। देखो अभी पिकैक्स कैसे बनाते हैं? 2 स्टिक और 3 ये प्लैंक। प्लैंक क्या होता है भाई? प्लैंक वुड लॉग लगा के प्लैंक बनाना। भाई कितना हेवेल है भाई, मेरे को और दिख रहा है भाई। ये बहुत बड़ा विलेज मिला भाई। किस्मत तो ओपी है भाई किसी एक की यहाँ पे तीनों में से। वैसे मेरे के ऊपर अरे बैठा ना तू लौड़ा के साथ। ये तुम लोग को भी नहीं, तुम लोग को नहीं लगता। मट्टी खोदने वाला औजार बना सकता हूँ, लेकिन स्टोन क्यों नहीं दिख रहा? अबे इधर पहाड़ है भाई, स्टोन मिल गया मेरे को। अबे स्टोन नहीं है, ग्रेवल है भाई, ये धोखा हुआ मेरे साथ। अखियों से अखियों मिली तो ये लौड़ा अपना है तो ठीक है। ये मिस्त्री आया कब से गाली दे दिया। अभी रुक जाओ। शुगर क्यों नहीं हो रहा? स्टोन इधर था ना शायद, फिर अपन इधर भी इधर था। चल बे। अबे स्टिक कहाँ से मिलता है? 2 प्लैंक ऊपर नीचे लगाने से स्टिक मिलता है। देखना तेरा वो ग्रीन कलर की बुक रहेगी, उसको दबाना क्राफ्ट करते टाइम, तेरे को उधर सब मिलेगा। तो एक भी पत्थर नहीं दिख रहा। नहीं है, दिख गया। इधर है ना मेरे पास आना।
उसके लिए पत्थर ला रहा मैं, ठीक है। भाई ये वालों तेरे को पास एक है ना ग्रूट? हाँ एक आयरन है ना तेरे पे? है ना, हाँ रुक जा, वो डब्बे में रखा था, उधर ही डब्बा है। मुझे चाहिए, रुक जा। किधर हो तुम लोग? मैं तो पत्थर तोड़ रहा हूँ यहाँ पे। मैं खाने का इंतजाम करूँगा फिर। दिक्कत है मेरी। सबसे पहले दवा और दुआ कहीं। अबे खाना बहुत है भाई, खाने की टेंशन नहीं है पहले तो। अभी मेरे पास कितना है पता है? 1 2 3 4 5 स्टैक हे बेल है। हे बेल नहीं बे, हे वो है, वीट है 5। हे बाले तेरे भाई ने बना फरनांस। अबे क्या घटिया किस्मत है भाई। सैपलिंग लगाओ, सैपलिंग लगाओ, झाड़ लगाओ, झाड़ बढ़ाओ। फाइनली भाई। तू क्या कर रहा है रे? हाँ? दिवांग दीवान भाई देवांग दिवांग देवांग दिवांग भाई माँ कसम। गाड़ में फूक दे भाई ये। नहीं नहीं भाई ये एफ से जा ही नहीं रहा है। क्या जाने जा का? रहा? रुक जा। क्या गला ना? किधर रखा तूने डायमंड? डायमंड बोल रहा हूँ, आयरन किधर रखा है? अबे आयरन किधर पे? आयरन नहीं दिख रहा था। शवलेल बनाया तेरे भाई ने, शवलेल बनाया। ओ भाई चल बे गधा। हाँ ये क्या शवल है? क्यों बनाया? आयरन का शवल बॉट है भाई तू, बॉट है भाई तू। छी भाई चला जा, इसका मेरे पास आयरन 2 निकालते आयरन हैं। है। चल बे खाने का किधर रखना है? मेरे पास खाने का बहुत है। खाने का इधर चेस्ट रखते ना। रुक जा, मैं चेस्ट। इसमें क्या रखा है? इसमें मटेरियल है ना, एमआर। अबे इधर पहले एक घर चुन लेते भाई कोई सा, या फिर बनाना पड़ेगा। क्या करना है रूट घर? अबे देख इधर बनाते हैं ना। ये देख इधर बनाते हैं ना घर। नहीं गेम बत्ती करो बे, तुम लोग का गेम बत्ती देखने आया मैं इधर, समझे ना? आ जाओ फटाफट, आ जाओ कोने में आओ तुम लोग। क्या मेरा होगा थोड़ा सा, मेरा ये ना स्टार्ट हो। रात को खेलेगा? ना भाई हम ये खेलेगा रैंडम। सर्वर तो मेरे पीसी पे होस्ट है। सर्वर चालू कर देगा ना तू? ना भाई नहीं होगा ना। नहीं होगा? रहता है मेरा। हाँ अच्छा ठीक है। तू जा रहा है क्या अभी? हाँ जा रहा हूँ। कितने देर से आएगा? मेरे को टाइम लगेगा। ठीक है ना,
ना फिर कल ही लोगों को सिंगल प्लेयर खेल सकता हूँ ना मैं? हाँ सिंगल प्लेयर खेल सकता है तो सिंगल प्लेयर में चले जाना, पर सिंगल प्लेयर में तेरा फिर अलग प्रोग्रेस रहेगा ना। हाँ वो तो मैं उधर सब सीख लूंगा कैसे बनाते हाँ हैं हाँ मतलब। ठीक है वो तो सिंगल प्लेयर खेल ले आज रात को, अपन कल खेलते भाई। ठीक है चल बाय। बाय। बाय 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 ग्रूट। बाय। ये इसका हाउ बाय रहता है भाई। हक भी दे माइक में। मैं रहेगा भी घर। पीले पत्थरा चाहिए तेरे को? पीले पत्थर लेके आना इससे। 1 3 4 5 गोलम को पेल क्या हो गया? कौन हुआ रे? 4 5 ये बच्चे 1 2 3 4 5 6 सब इधर क्या कर रहे थे? शोवेल बनाया है भाई बॉट ने। मेरे पास 2 आयरन है पता है। उससे क्या बनेगा? कदे पिकेक्स बना था ना। या भाई 2 बनाता है रुक जा। 2 3 5 6 ये घर तोड़ा गया तूने? हाँ एक ही घर तोड़ा जिसमें बेड वेड कुछ नहीं था। कुत्ते पता के लिए। हाँ ये 2 है ना, मैं एक पालूंगा। ज़ॉम्बी मार। ज़ॉम्बी नहीं गधे स्केलेटन। स्केलेटन है किधर? दिख भी नहीं रहा है। हड्डी नहीं दिया भाई, मेरी हेल्थ खा गया पूरी। अभी इधर बेयर दिख रहा है तेरे भाई को। भाई मिस्त्री बेयर अभी ये तो आंख पे आ रहा है भाई। तेरे भाई के पास है 64 ब्रेड ठीक है। इसमें 2 आयरन और 1 वो लगाता है।
तो एलॉय बन जाता भाई। तो भाई ने मारा बेर को, ठीक है ना। सलामिंग जुत्सु। अबे लोग ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई ये तेरे भाई को मिला 2 हमडी। 2 अगर 2 में 1 तो हो जाए टीम। किधर गए? ये मेरे पीछे। हट बे। हटा दे। अरे यार मैं उसका वो ले रहा था। मेरे को पीछे स्पाइडर ने पेल दिया। ऐसा भी इधर अभी मिट्टी कहाँ से लाने की? मेरे पे ये कर रखा था। हड्डी नहीं दिया बूस्टी का। वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये ले इधर आ। गधा मरेगा तू भाई। हट जाओ। नॉट टुडे, थैंक यू। इधर आ। ओए कुत्ता पाल लिया क्या? इधर आना। नहीं गधे, कुत्ता थोड़ी ना होता है वो। ये ले इधर आ। बे तू बज मत, तू ये ले। वो देख। Love me, love me, love me, love me. Tell me pretty love, so look me in the face. Tell me that you love me. बॉट है भाई तू। दिख रहा ग्रूट तू, तेरा प्रो प्लेइंग। वे बहुत दिन के बाद खेलता लौड़े। हाँ तो मैं उससे भी ज्यादा टाइम के बाद खेल रहा हूँ ना। बहादुर। अबे दिक्कत कुछ नहीं, बस एक्सप्लोजन होना है। चल बे। आप बोल रहे एक्सप्लोजन तो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो किया है ना? अंडरमैन को मारूंगा तेरा भाई, अंडरमैन को। अबे पीछे से आया था। आओ भाई। गेटर आया तेरे को देखने को? I'm only for you. क्या कुत्तों किधर है? मेरे लिए खेलना है। और लेके आ रहा रुक जा। एक को तू पे आ, एक को मैं पे। हाँ पालता है। वाटर बकेट बनाना पड़ेगा।
अभी बोलेगा भाई स्लैश शॉप कमांड काम ही नहीं कर रहा। क्या? तू मैं किधर बोला कुछ? मैं बोला क्या? मैं बोला क्या? मेरे बोलने के बाद बोल रहे दूसरी की। नहीं तू बोलेगा पर मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है भाई। नहीं बोलूंगा। बोला ना पूरा भरोसा है तेरे पे। नहीं बोला तो ये कुत्तों किधर गए रे? ये तू है ना? उतना तेरे को नहीं चाहिए क्या? Feelings for you. I don't fucking care. ये लौंडे लोगों को खिलाने का क्या है? जा रहे खूब सारे पेड़ तोड़ के ला, घर बनाने का पहले। ये सैपलिंग क्यों पड़ी है झाड़ में? I don't fucking care. I don't fucking care. पत्थर है क्या? हैं? पत्थरा। हाँ ये लेना। लगाने आया था तो छोड़ दे रहा तू। तेरा भाई सब जेब में लेके जब वो पेड़ तोड़ के ला, ओक ट्री। सेव करने दे दे। तेरे को क्या चाहिए? पेड़ चाहिए? ये मिल गया। एक या 2 स्टैक लॉग लेके भाई, ओक लॉग शॉप में से खरीद लेना। आओ बोल दिया भाई। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि शॉप चाहिए, ठीक है ना? सो माइंड योर लगेज, ठीक है? इंग्लिश तो खराब। ये आया करे गोलम आया कि इधर मुझे कहाँ ढिंचा कर रहा है? किधर है गोलम? आ जा। सुपर हीरो दिख तो नहीं रहा गाँव वालों के आसपास। बाय बाय दिल बड़ा बाय बाय निकल ही आसान इसकी नरवाना। मैं नाचू आज छम 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 भाई। दे भाई पचक पचक क्या कर रहा है? चल बे। ये पानी में लोग पचक पचक करते हैं। तू भी कर ले। अबे सेट होम करने का है ना? आओ और तेरी इधर क्या है? किधर है होम? किधर है अपनी? चाहिए क्या? फ्लैश नहीं आ रहा। अननोन अनकम्प्लीट। कौन मारा बे? गधा
बता सेट होम कर रहा है और कितना बेशरम हो सकता है भाई तू। अबे तो किधर लपड़ा होएगा तो वो रहेंगे, कैसे आएंगे वापस बाहर? अबे तो इसलिए मैं तेरे को बोला वो कर ले स्पॉन पॉइंट। रिस्पॉन्स पॉइंट ना ये यहाँ पे किया ना इसका घर भाई। हाँ जा कोई भी एक घर जा, वहाँ से बेड उचका के ला भाई और घर पे लगा अपने। पे ला रहा हूँ या फिर बिस्तर गोली कर रहा हूँ बता। अबे होटल दिख रहे भाई। ये भाई को ना पीला वाला बॉल, ठीक है। पे इधर आ। रिस्पॉन्स पॉइंट्स इधर अरे इधर नॉटिकल्स बता तेरा भाई को है, नॉटिकल्स बता। अबे बज मत तू ले। दो दिल भाई इधर हाथ में क्राफ्ट नहीं है क्या? स्लैश क्राफ्ट आओ और बजना तेरे को और कुछ बचा है क्या? है अरे घाट हट भाई। अबे होम पे वापस कैसे आओ फिर मैं लोकेशन से भाई? होम पे वापस कैसे आओ? इधर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेना और कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो मैप में लगे तेरे को? नहीं रे तेरे हाथ में क्या है वो? अच्छा पोर्ट चौक। हाँ क्या बोला तू? अबे अपन कैसे स्लैश होम करते थे ना वापस वैसा पूछा। तो वनीला बनाया ना गधे मैंने। बोला तो कुछ भी नहीं डाला भाई। नल्ला तेरा भाई गारा पत्थर आ दो। हेल्थ क्यों खत्म हो रही मेरे को पता नहीं, लेकिन हो रही भाई। ये मम्मी स्पाइडर ढूंढ तो रहे। क्या चाहिए तेरे को? स्पाइडर। तेरे 6 पे जा, तेरे को स्पाइडर मिलेंगे। मेरे 6 फ्रोजन लेक और नहीं मिला बे। कदे 6 पे बोला तूने, किधर है? तू गया क्या? दिस इज अ टेक्निकल स्पिरिचुअल रिचुअल। चल बे कदे तेरे को कुछ पता नहीं है भाई। बट अबे इधर ही है तो क्लॉक। क्या रे मम्मी? भाई इसलिए मैं घर और बिस्तर बनाया हूँ भाई। और देख रहा है मेरे को भाई बेशर्म जैसे। कौन पे भी?
कोई बड़ा वजूद पेल के गया लगता है। नहीं रुकना, घर आना, घर पे आके देख। घर जाके देख भाई, बिस्तर हड़प लिए दो विलेजर लोग अपना। हड़प लिए? आओ उसको कैसे खेलने की ये आई रे? ये देख मेरे पीछे जो स्पाइडर। किसको क्या खेलने की आई? वो जो तेरा दोस्त था। डोमिनेटर? नहीं, ये जो आया था। हाँ ऐसे ही लोग बोल रहे थे कि माइनक्राफ्ट खेलने का है, माइनक्राफ्ट खेलने का है, तो मैंने बोला ठीक है भाई खेल लेंगे। तो सर्वर ही ज्वाइन कराने का ना तेरे। अबे क्या है सर्वर पे, फिर मैं नहीं खेल पाऊंगा ना इन लोगों के साथ। किसको पूछ के सोया भैया? चल सर्वर ज्वाइन करा दूं, पर फिर मैं सर्वर में उनके साथ खेल नहीं पाऊंगा ना, समझ रहा है? अबे मैं उनको सर्वर भी दे दूंगा, बोलूंगा तुम लोग को खेलना है ना अकेले, जब मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो मेरे सर्वर जाओ तुम लोग। क्योंकि मैं फिर उधर पे तेरा भाई फ्लेक्स करता है तो सब पैसा बहुत है। गधा सो जाना ये। सोने का है क्या? तो आजा सो जा, सीजन एंड करते भाई। ये तो देख तेरे बगल में, अबे तेरे बगल में विलेजर पड़ा हुआ था बे उल्टा। उड़ गया गधा। राइट क्लिक करना। मेरे बदन में पहन चुका। हाँ कर रहा है वो देख। अबे अपग्रेड हुआ लवाओ। अबे कम कर दिया? नहीं बढ़ा दिया भाई। हाय ये लवाओ। अबे 33 स्टिक का एक एमराल्ड। हाय ये स्कैम कर रहा भाई ग्रूट। स्कैम कर रहा? फेल दूं इसको? नहीं आयरन फार्म बनाने का। इसका बाप आया कि नहीं अभी तक? बाप स्पॉन नहीं हुआ अबे। गोलेम ने नहीं हैं? गोलेम ना अभी तक comes and go. ये क्या टट्टी है? दो पफर फिश मिला भाई मुझे। क्यों? नहीं रॉ कॉर्ड मिलेंगे। पवर फिश को फूड में डाल दो क्या? कोई आके पेल लेगा। करे मेरे बंदे लोग नहीं। थोड़े बहुत हाथ चल रहे तेरे। कौन मार रहा था? अच्छा मेरे को लगा तू मार रहा। मारू क्या तुझे? लेट्स गो। एक हड्डी मिल गई बहुत टाइम के बाद। आजा कुत्ते किधर है? एम तो है। क्या नहीं पड़ी यार ये हटे। इधर कुत्ते आजा 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 आजा। ये हड्डी हड्डी। अबे ये कुत्ता नहीं तो हड्डी क्यों खाता है भैंसो? क्या पता। ये लेना टेम हुआ क्या? नहीं हुआ बे अभी भी टेम। पेल लेगा मिस्त्री, समझा करो इसको। हाँ है मेरे इधर किधर है? तू किधर है?
तूने विलेजर को चाटा मारा ना तो वो बैट की वजह डब्बे पे खड़ा हो गया। इधर अबे तू कदे इधर पीछे है वो माउंटेन पे ये झाड़ी में इधर पीछे भाई ये घर के पास है। कंपास बना भाई ईस्ट में मिल गया। इधर ये एक ही है दो तूने है हड्डी अभी दो है। तूने किसको हड्डी खिलाई थी? क्या मालूम किसी एक को खिलाई भाई। ये ले इधर आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ए ये मेरा है वो उधर है पेड़ के नीचे राइट में। अरे कदे उधर हाँ वो देख सीधे हाँ सीधे यही ये देख क्या कर रहा है। पकड़ हाय ये आजा भाई कुत्ते आजा। अबे इधर एक काम करता है वुड बोला मेरे पीछे आओ जल्दी। 2 मिनट 19:30 हुआ बे तेरे पीछे मतलब किधर बे? रुक जा मैं यार हूँ तेरे पास। ये ले अपने कुत्ते को खिला। तेरा कुत्ता कौन सा मेरा है? तेरे पीछे है तेरा वाला ठीक है खिला। हाय ये जब फूल तोड़ते थे भाई अपन डाय बना। अबे स्टिक बहुत मिल रही है देख। अबे ये देख मैंने झाड़ काटे छोटू बे तेरा भाई पीला रंग लग रहा है। ये देख रहे छोटू इधर आ। घर के पीछे छोटू है भाई। ये तेरे भाई ने पीला रंग लगा दिया। अबे एक चीज ट्राई करना है मुझे तेरा। हाँ तू जहाँ जा रहा है जा इधर आ। ये देख इसको राइट क्लिक कर छोटू को। राइट क्लिक नहीं हो रहा तेरे से? ये देख मेरे को ये फिजिक्स समझा भाई। वो तेरा था ठीक है ये मेरा था ठीक है पर ये मेरा क्यों है? समझ रहा मेरी ये ना कंट्रीब्यूशन है भाई। पर मेरा ओन कैसे हो गया? जरा मैं पानी लेके आता हूँ ठीक है। तू लॉग्स नहीं काटा ना? मेरे जेब में 25 पड़ा है 30 है। हाँ देख वो डाल दे। मैं आ रहा घर बनाता हूँ। बे रति क्या रे? बोलना। बहुत शिकायत आ रही है आजकल तेरी। हाँ यहाँ झूठे। अरे स्ट्रीम करो क्या? कर स्ट्रीम बोल रहा है क्या? मिस्त्री हाँ स्ट्रीम बोल रहा है क्या? यस मत कर। क्यों? मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो तेरे को क्या सुनाई दिया? क्या ना एक सेकंड बोला ना कि मेरी कंप्लेंट आई। हाँ तो बोला ना स्ट्रीम करो क्या? मुझे लगा शेयर करूँ क्या? वाव सही है।
शायद। वाह 400 IQ भाई। आइए प्यारा सा घर भाई। रंडी इंसान है भाई तू पूरा। कौन? अरे वो गाली दे के गए। आइए बड़ी वाला। तू तो बहुत फेमस है। क्या? क्या? कुछ नहीं। बोलना जल्दी बोल जल्दी। मैं बोला तो बहुत फेमस है। हाँ बहुत। यार कितना क्यूट है वो। कौन? मेरे स्कूल में मेरा दोस्त है। हाँ क्या? दुक्का बोला तो था बोला तो उसका नाम इससे चालू होता है। मेरा भी। और क्या बोलूं उसका पूरा नाम नहीं बोल सकते ना। इंस्टाग्राम दो क्या? मैं क्या करूंगा उसका? कौन है? क्या पता? कोई तो बॉट आया भाई। जीबी। कौन है? जीबी आई। जीबी लड़की है? हाँ तेरे को नहीं पता था? नहीं। उसने कभी मुंह नहीं खोला ना इसलिए। समझ रही ना? अरे ये क्या टट्टी बना रहा है बे? अरे यार रुक जा यहाँ गूगल है थोड़ा सा। कौन है बे? ये रद्दी टूटी नहीं बे रद्दी। कौन गया बे? बोलो। लौड़े के बाल जीबी। देखो एक सही बात बताओ क्या वो रहता यही कहीं है जहाँ से ट्यूशन जाती है पर पता नहीं कहाँ उसकी बस ऐसी जाती है ना? मैं भी तो उस दिन वही बोल रहा था भाई। तो उसका मैं क्या करूं अभी? मैं आपको नहीं बोल रही। तो उसका मैं क्या करूं अभी? हेलो हाँ तो मैं आपको नहीं बोल रही ना मैं फोन पे बात कर रही। ठीक है मतलब आपका कॉल भी चल रहा है गाने भी चल रहा है और किसी और का भी कॉल चल रहा। हाँ ये मल्टी विंडो भाई और गाड़ी भी चल रहा है। हाँ मल्टीमीडिया है भाई। और अभी मल्टी विंडो एक्सीडेंट भी होगा भाई। घप से ना। सही में वो क्यूट है ना? मैं भी वही बोल रहा था भाई। तो पैक करा के घर ले जा। और मैंने सारी बात मानता है। ठीक है तो ये कर लो तुम पहले। मैं क्या करूं उसका फिर? अरे बोला मिस्त्री में तेरे को नहीं बोल रही भाई मेरा कॉल चालू है। आओ पता है कितना कॉल है भाई। हाँ चालू है ना। ओके बस मेरे को भी बात करनी तो किससे बात करूं? आपको भी बात करनी है? मेरे बाबा लड़की मुझे करनी है। मुझे पूरी दीदी का मैं क्या स्नो का मैं क्या पूरी दीदी को फोन कर रहे तू? पूरी को बोला लॉरी को बोला ये लौड़े का बाल जीबी। हाँ बोल ना बोल आगे बोल। मैं क्या जो देखो और चाहिए क्या? हाँ निमोर अरे पूरी दीदी से पेट भर ले। नहीं उल्टा होगा भाई। ये हट रही। ट्रांसलेट प्लीज। क्या उल्टा होगा? फिर से बोल भाई छोटी फिर से बोल। उसने मेरी बात मान यार। उसने मेरे बॉटल मैंने उसको बोला बॉटल का पानी फेंक के दूसरा भर गया वो लेके भी गया। तेरा कुत्ता मर गया कह रहे मिस्त्री? नहीं ये तो घूम रही है देखिए बता। पेल दे उसको। हाँ पेल
स्पिल बड़े हो अबे टीम वर्क कर रहा था भाई। गए। ग्रूट एक और। अरे यार है ही नहीं और। ठीक है ना देखेंगे। मार भाई। कुत्ता तो है भाई, कुत्ता हो ना तो इसके जैसे हो। अबे आयरन चाहिए भाई। गोलम किधर है? डबल भी नहीं निकालते यार। तुम्हारा भी होगा कोई ऐसा थोड़ा है, तो तेरा पता है कौन? हाँ सही बोल रही थी। मेरे को तो ही नहीं दिया भाई। मेरे को भी दी। अरे भाई क्या बोलूं, जमाने की माँ का भोसड़ा। यार मेरी काला अरे माफ कर भाई, तेरे को पिन दे छोड़ भाई। मैंने किसी से बात वो डबल मीनिंग में आया, बात करने बंद कर दिया। पहले वो एम था, अब फिर वो ए हो गया, तो यार हो जाएगा। पहले बी भी था। समझ रहा ना ग्रूट? समझ रहा मैं दिक्कत समझ रहा मैं। किसके तरफ जा रहा भाई, सब समझ रहा ना। साले। ठीक है भाई, बात करना बंद कर देना है ना ग्रूट। ठीक है भाई। ग्रूट जिसका नाम आर से चालू होता है ना उससे बात करना बंद करना भाई। इसका नाम आर से चालू होता है? हाँ भाई। क्या बोला तू? क्या बोला तू अभी? मैं तेरे से बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ग्रूट से बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ये कर ले तू। भाई ओड़ा के मारा फिर उसको। ये बात कभी कर लिया क्या? तू नहीं कर सकती क्या? एक कुत्ता जो आपकी जिंदगी बदल दे। हाँ ठीक है। नहीं ये मेरे को मारेगा तभी काटेगा क्या उसको? गधे। साले। मैं बैठी हुई हूँ। तू कहाँ नहीं ले, मैं काटेंगी। साला मार रहा उसको भाई। भूख नहीं लग रहा। बहुत लगी ना छोटे तेरे को, इधर आ, तेरी पूंछ नीचे आ गई। बाय 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 बाय। क्या मिला बे? क्रॉकम। मिस्त्री तू मेरे को अब बोल, ज्यादा बज रहा है क्या? मैंने तेरे को कुछ बोला ही नहीं। आइए। मैंने ना पहले ना मैं बैठती थी ना एग्जाम के हॉल में, वहाँ पे ना एक पी नाम का लड़का, मैं ना बोली करके ना वो है ना डबल मीनिंग इशारे बहुत अजीब अजीब करता है, उसको देख के मेरे को मतलब फनी मतलब दिखता है वो, तो मेरी डबल मीनिंग करती है। ठीक है भाई, अब वो बंद हो गया, अब वो दूसरा लड़का मेरे से बात कर रहा था, उसके लिए भी डबल मीनिंग निकाल दी। अब मैं उसको बोल रही पहले एम था, पी हो गया, बार हो गया, मेरे को तेरा भी पता है, तू डबल मीनिंग क्यों निकाल रहा है? ऐसे ही लोग रहते भाई। ऐसे ही रहता है। अभी ए वाला भी आएगा। वो मेरे नहीं थे, वो मतलब मैं वो ऐसा मानती थी। समझ रहा मैं तेरी तबलीग। हाँ समझ। नहीं तो तू भाई तू ऐसा है ना करके डबल मीनिंग निकालेगा, पता है ना। समझ रहा मैं तेरी बहुत बहुत सारी तबलीग समझ रहा। और मैं अपने छोटे वाले को क्यों ही पटाऊंगी भाई। ये तो ऐसी सस्ता वाला सर्वर है, मेरा ओरिजिनल वाला सर्वर भी है ना। इंग्लैंड का सर्वर किधर है? उसका तो सबका बंद हो गया भाई। किसका सर्वर? अरे जिसके साथ मैं पहले खेलता था, मतलब पहले जिसके साथ पुराना सर्वर बनाया था ना। क्यों आई है? कौन बोल रहा है ये बच्चा? ये किसी का बच्चा घूम गया है। गेट खुला रह गया था ना, तो पता नहीं कौन कौन अंदर आ जाता है। क्या हो गया?
किसको बोल रही है? गोल गोल घूमता हुआ साइड मतलब गोल नहीं घूम रहा है ऐसा वाला। रुक मैं आ रहा। Who says, bring it up to my ears. साले ने सब खा लिया, फिर भी यूं कर रहा भोसड़ी का। हेलो तेरे आइए, तेरे भाई को मिला हनी। मिस्त्री, हनी मिला, हनी। हेलो, हेलो। तेरे भाई को हनी मिला, हनी। रुक जा बे। कौन है बे? कौन है बे? कौन? ओ स्नो आई भाई। Do we need somebody just to feel like we're alright? रुकना कुत्ते। इधर मत बैठो। आपको नहीं चाहिए? आपको चाहिए? वहाँ पे बैठो ना बेटा। अंकल एक दो मिनट। अरे यार। हाँ। यार मिस्त्री, तेरा दोस्त नहीं आता रे आजकल? जाए फैन का लौड़ा जाए। वो तो मर गया ना भाई। झूलर जाए। Feel like we're alright is the only reason you're leaving tonight, 'cause you're scared to be lonely. पास हो गया इतना? इधर आई। When we know it's wrong, when somebody bad for solo, let me all let us know. We don't know, 'cause we're scared to be alone. Even we know it's wrong, when somebody bad for solo. Holding on tonight, 'cause we're scared to be alone. Is it
just our body. Are we both close enough? Cause we're scared and lonely. क्या सुन रहा है? गाने. किसके गाने सुन रहा? शमकीरा. हाँ, गधा. अबे यार एक घर में ट्रैप डोर था, कुछ सारा वो चाहिए मुझे. तू हो मेरा यार, तुम ही हो करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में. गधा. तुम्हारी माँ का भरोसा. नॉस्टैल्जिक तो है भाई. तेरा भाई अभी खोलेगा ओयो, ठीक है ना? तेरा भाई भर भर के बिस्तर बनाएगा. पेल दे साले को, पेल. Breaking down, everybody knows them faking out. पेल 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 पेल. पेलम पाल, पेलम पाल. तू क्यों कूदा गधे? Understand need. So cold outside. I'm alone, I'm alone. पेल साले को, पेल. अच्छा तेरे को चिमकन खाना है ना? चिमकन दे रहा हूँ तेरे को. तेरी पूंछ हो गई है ऊपर. पूंछ तो ऊपर दिख रही थी, ठीक है? ये तेरे भाई को और एक कुत्ता मिल गया.
काहे इतना कॉपर भाई, कॉपर चाहिए ही नहीं भाई। ये गेम वाले ना कुछ तो कॉपर का करना चाहिए गेम, समझा मिस्त्री? क्योंकि कॉपर यूजलेस टाइप लगता है भाई। कैसा अभी? क्या? तेरे भाई को और एक गोली मिल गई भाई। ये उधर से मटेरियल चोरी करके ला भाई। और तेरा भाई साथ में देखेगा। वन पीस। अबे कौन है? मैटर नहीं, मैटर नहीं, मैटर नहीं। मर जाएगा भाई। लॉग आउट कर, लॉग आउट कर, लॉग आउट कर। वो मेरे पे छटक गया, मेरा वाला उस पे छटक गया। मेरे को सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मर गया क्या? मर गया हो। कौन मरा? पर किसका मरा? मेरा वाला मर गया। ये अबे मर गया वो बच्चा है। हाँ अब एक बच्चा है ना यहाँ पे। सर्वर बंद करना था, ठीक है यार, चांद दिया। एक और बच्चा था ना वो छोटू, वो भी तो मेरा ही है। अबे उधर है ना और एक, बहुत खेले में। रुक ना यहाँ पे। आजा इधर आ, देख तेरा भाई क्या क्या लेके आया। हाँ बिल्ली को। अब छी भाई, 2 मछली खा के भाग गया। ये बड़ा हो गया भाई। ये आजा। तेरा भाई क्या क्या लेके आया भाई? क्या लाया? सुन ना, पीछे बैरल रखा है, उसमें और वो डालना है तेरे को। क्या डालना? वो क्या होता है भाई? भड़वे रखा है, उसमें कॉपर और फूड और फूड डालना है। कॉपर का कुल्हाड़ी क्यों नहीं बना सकता तेरा? ये बहन चोदो, ये क्या बकचोदी है? तेरे भाई को सैडल ले लिया। हाँ साइड ले। कितनी हो रहा भाई? ये मरा क्या? नहीं, अरे क्रीपर मुझे नहीं मार सकता इतना आसानी से। अपने को चाहिए बंटाटे का फार्म। किसका? बंटा का।
ठीक है क्या बनता था ये वीट वूट जो भी है ना वो सब भांग घोसड़ा निकाल दो। बहुत मारा ना तेरे को जब भाई ले छोटू ये देख कैसे चढ़ा हुआ है देख रहा देखा बे क्या फेंका बे पानी में कदे सैपलिंग एप्लिक मत फेंक लगा ले सैपलिंग मैंने उठा लिया तेरे पाप फेंक दिए थे मैंने ये जो भी पाप किए थे अभी तक घोर पाप जो तूने निष्ठा से जितने पाप किए थे ना सब फेंक दिए। घोड़ा चाहिए भाई घोड़ा लोड़ा लेना अबे मेरे को सैडल मिला एक भाई मैं मछली पकड़ रहा हूँ ये भाई गधा उसी पे नाच रहा है वेलकम टू वैलोरेंट गधा हटना हटना बच्चों आजा चल मेरे पीछे चले आजा सो जा जा A city police. यार अबे तो स्ट्रीम किसके लिए कर रहा है बंद करना रद्दी के लिए क्या खा लिया भाई जो मुझे पॉइजन मिल गया अबे लकड़ अपना पत्थर का ये आर्मर नहीं पहन सकते क्या तुम सब होना चाहिए पत्थर का पैसा भी मिट्टी को मार रहा है AFK था भाई लड़ो 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 मार मार शुगर करना लगाएगा तेरा हट जा क्या लगाएगा
शुगर कम नहीं। रुक 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 रुक। ये शायद तेरा रहेगा क्या? इसको देख, बैठा के देख। हाँ ये तेरा है। ये बच्चा मेरा है। तुम चाहे इसको पीलिया मारने के बाद डंडलान पत्ते कलर है मेरे को पल पल चाहिए भाई। लौड़े हिसाब में मांगा जो भी मांगा। कितना बचता है नहीं तू? 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला भैंचो। अबे बहुत झाड़ काटना है क्या? काटना। ओक ओक क्लैक्रो घर कैसे बनेगा? तेरा भाई काटे नहीं। और सैपलिंग उठा लेना, देखेगा तो लगा देना। कोने पे मारो डॉगोस को मारो। कोने पे हाँ अबे तूने यहाँ पे एक और चेस्ट क्यों लगाया? क्या सैचल नहीं मारा है चेस्ट गधे। अपना प्रोग्रेस देख रहा है ना तू? आएगा ले ओ। पे लगा तुझे सैडल। ये यार ये सैडल लगा। हाँ? मेरी स्ट्रीम देख जल्दी से, रुक जा। देख जल्दी देख। चुरा के दिल मेरा चोरिया चली। उठा लौड़े को उठा यार। ए विलेजर दे रे। ए विलेजर दे। ना उधर ले जाना है ना उधर। नहीं चाहिए क्या इसको? ग्रूट अबे पहले कंफर्म कर नर है या मादी है। ये तो कैची कर रहा रहेगा हमसे। कंफर्म मान नर है क्या मादी है। क्या पता। कैची भाई। और चाहिए भाई मुझे। क्या चाहिए? कट का सामान रख के और लेने जा रहा मैं। फोर्स चाहिए भाई उसको। फोर्स कंडम। हाँ भाई। कंडीमम चाहिए भाई इसको। हाँ भाई खरीद ले जाके। हाँ 20 रुपए का मिलता ना। मेरे में थोड़ा ये कर लो भाई तुम। मैं कुछ नहीं कर रहा। चुआ के दी मेवा पेरू क्यूट है। ये देख बता। हैं? कौन है चू? है वो। अभी ये कौन है भाई? ये दिखा। अरे यार कौन है?
उसका कैमरा गलती से चालू हो गया है ग्रूट, जल्दी से देख ले। ये वती तब देख ले भाई जल्दी से। कुत्ते के साथ क्या कर रही तू? घूम गया है। गंदा फेस रिवील करो वती, फेस रिवील। तेरे को कोई नहीं मिला क्या? क्या? तेरे को और कोई नहीं मिला? नहीं। ठीक है भाई। फेस रिवील करो वती। अबे यहाँ पे बिल्लू ही घूम रही थी भाई। बाय बाय। अरे ए तू भाई किसको बोल रही है? ए भाई अबे यहाँ पे बिल्लू भी घूम रही थी जिसको मैंने खाना खिलाया था वो। तुमने देखा नहीं वो कुत्ता? मैं बताई तेरे को। देखा ना? अबे ये बैरल खोल रहा है गधा। कांटे मार। ये नहीं नहीं बिल्लू आ जाओ। मार उसको। लेके भागा है क्या वो कुछ? क्यों रे? पेल दिया भाई बेचारे को। वो लेके कुछ भागा क्या? नहीं बस खोल दिया बैरल। फिर से हाथ नहीं लगाएगा बैरल को। पेलो सालों को। बट आपको मेरा फेस देखना है? हाँ मुझे भी नहीं। अभी नहीं करना। अभी नहीं है। नहीं हो। एम्पलीट्यूड तो है भाई। ना फोटो फेंक। फोटो क्या है भाई? फोटो आज है कल नहीं। I am lost. लड़कियों का क्या कर दिया? किससे क्या किया तूने? तेरा भाई इतना माउस तो वैलोरेंट पे नहीं हिलाता भाई जो जितना कि माइनक्राफ्ट में झाड़ पल कर दिया। तू वैसे भी टाइम पास कर रहा है मुझे। नहीं मेरे को खाने दे फिर तू दे दे मेरे को। लैपटॉप खा रहा है क्या वो? क्या करना है तुझे? और तो पढ़ाई कर। वो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट पढ़ना है। तो YouTube फोन पे तो मुझे लैपटॉप चाहिए लेकिन हर टाइम तेरे पास नहीं रहेगा। लैपटॉप कर सकता है क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। मेरे को क्या बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन का वीडियो भी देखना है और पीपीटी भी करना है। वो मेरी कोई गलती यार मम्मी। ये ग्राफिक डिजाइन तो है भाई। मम्मी वो मेरे को नहीं दे रहा है। वो कहता है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। कल भी खुद के पास रख दिया था लैपटॉप दे ही नहीं रहा। यार मैं आदर चोट तो ग्रामर नहीं आता मेरे को वो समझना। नाउन समझना है बोल उसको। नाउन नहीं आता। ABCD पढ़ना है भाई। वर्ड एग्रीमेंट क्या है? सारे पंपकिन है यहाँ पे। कुत्ते भी बहुत सारे भाई पर हड्डी नहीं है ना। केव नहीं दिख रहा यार। ग्रूट या आइलैंड भाई। तेरा भाई भी ढूंढेगा केव है। मुझे खोदना नहीं है भाई केव। बहुत मेहनत लगती है उसमें। एक तो केव्स एंड क्लिफ डाल दिया और गहरा केव है भाई। खोदते 4 दिन निकल जाएंगे। कुत्ते जिंदगी लगा लिया। क्या? अबे पूरा जंगल जल जाएगा। नहीं 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 नहीं। फिर से डब्बे पे हाथ लगा भोसड़ी के। अरे पल इनको पे दो। अबे बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। समझा के रखा उसको पहले बोल रहा। बहुत म्याऊ म्याऊ कर रही है आज। पगार से ज्यादा म्याऊ म्याऊ कोई और करेगा नहीं। समझा? देख फिर से वार्निंग दे रहा तेरे बिल्ली को मिस्त्री में।
चल लौड़े। वापस आ गया क्या? हाँ बोल। कर रहा। रुक जा 1 सेकंड, इसको मारने दे। रेंडरिंग डिस्टेंस का मैं तो वापस वहीं आ गया बे। अबे घटिया केव है भाई, नाम का है ये तो केव सिर्फ। हट। क्या है? नाम का केव है भाई। ये इतना ऊपर पानी लेके कौन गया? भिंचो जो इतना बर्फ बन गया पानी। बर्फ की चट्टानें बन गई थी। कौन वो आइंस्टाइन था जो वहां पे गया? मनस्त्राम स्लैंग। जरे उसका की कौन सा था? क्लोज अप करते हैं। ऑफ कैसे करूं भाई? छोड़। क्या रहा है मिस्टर? वो ऐड पता है क्या तेरे को? कौन सा? क्लिक द बैनर टू लर्न मोर। वो तो वही सुन रहा हूँ बे मैं लूप पे। क्या आप क्लोज अप करते हैं या दुनिया से डरते हैं? क्या छाप रहा है? क्लोज अप क्या है? कथा 90s। तेवा भाई ढूंढेगा घाव। ये कीप इन्वर्टर रख दे। कीप इन्वर्टर रख दे। क्या दूं? कीप इन्वर्टर। चल बे बज मत अभी, ठीक है ना? ये तेरे भाई को मिल गया पोर्टल। काय का? लौड़े का चाहिए। अबे बता ना गधे। अबे इसका पोर्टल पे। वो रूइन पोर्टल मिला तुझे? हाँ। ये देख रूइन पोर्टल कंप्लीट हो रहा क्या? कोई कोई रहता है भाई कंप्लीट हो जाता जो। हो जाएगा मेरे ख्याल से। अबे नहीं मैं मरूंगा भाई। अबे लेकिन इस पे क्राइंग ऑब्सिडियन लगा हुआ है। पता था। हाँ हाँ कंप्लीट हो जाता है। ऐसा भी। हाँ ये कर्स ऑफ वाइंडिंग सिल्क टच पिकैक्स गोल्ड। सिल्क टच मिला तुझे? हाँ गोल्ड। अबे गोल्ड है भाई पर गू भाई। ऑब्सिडियन नहीं दिया पर ये। नहीं है ना? हाँ तो नहीं रहेगा वो। हट बे गोल्ड है भाई गू भाई। एक गोल्ड क्यूब मिला भाई। चल ऑफ करो चुप्पू। अंडर वाटर फीवर। गोल्ड ब्लॉक तो मिला। पानी में गया भाई बंदा।
ये बच्चे किधर है? बहुत मेहनत किया तू आज। अबे लेकिन डब्बे में वो उसने ये नहीं दिया था मेरे को, ऑक्सीजन नहीं दिया क्यों कर? किसने क्या नहीं दिया तुझे? ऑक्सीजन किसने? हाँ तो कभी कभी नहीं रहता ना। अबे क्या घटिया किस्मत है भाई। अंडर वाटर केव था पर मुझे लगा भाई रहेगा मटेरियल। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो। ये स्केलेटन फ्री फायर खेल रहा है। अरे ये क्या है? हट भाई, ये लो क्यों था भाई? हट भाई, कच्चा कच्चा मटेरियल मारो क्या दूध ही ले भाई। अबे नूब मर गया तू? का अच्छा प्यारा सामान सब गिर गया भाई ऊपर, सब गिर गया। एनएचके क्या? किधर गिरा वो? मैं किधर गया था? बहुत सामान था ना इसमें। किधर गया था ना तो? भाई ये तो बचा है जिंदगी में। स्लैंग आया ट्विटर। बस यही रह गया था जिंदगी में देखना। हमारा कुतवा किधर है? एक विलेजर ज़ॉम्बी बन गया, देख लेना। अरे मार चुका है वो ज़ॉम्बी। इधर आना पड़ेगा मेरे को लगता है। माल मसाला किधर गिर गया? वेट करो। अबे मेरे कुत्तों आओ तुम। Baby, do you love us in the fall? Cause I'm a lover, been father. Never lost comfort. Time the now Shimona come on. I'm so used to share. You only left me alone. But I'm a one with the sun. I found peace in your eyes. You
no candy shot. किधर है हमारा सामान वहाँ? ग्रूट, हाँ? ये लोग ड्राउन निकाले थे ना, हाँ। उसके पहले तक ना तेरे को उससे जो zombies थे ना वो तैर सकते थे, पता है? अभी zombie सिर्फ नीचे जाता है पानी के। बे घटिया गेम भाई। देवा सामान खीवा बे। ये और गाय क्या दर? नहीं है। अब इनको ग्रूट कंपास बना ले भाई, आयरन जुगाड़ करके। No point of trying, I'm out one, 'cause I was trying for too long. You're right. है ना? This news will make your day. Tell you. Ding 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 ding. क्या गिटार बजाती भाई छोटी। नो खाना नो पानी। दो पुड़िया शक्कर के बेंचों के गांड में डालो। हाँ। एक डोर गायब हो गया बे।
नहीं तलवार को भी इतनी धार है ना, ये तेरे धार को नहीं है। ये खबरों मत बोल बाय। खबरों पे दिया रहा अभी। ओ भाई ग्रूट इधर माइन शाफ्ट है। पुष्पा तो एक ही मिला है भाई। पालना मिल गया भाई। बचाओ। मैंने क्या क्यों लाऊंगा? मेरे को गुस्सा आ रहा है। आई ये स्ट्रीम देख तो जरा। क्या सीन हुआ मेरे साथ? स्ट्रीम देख तो जरा। अबे अभी तो मैं खतरनाक जगह पे हूँ, मैं यहाँ पे पॉज नहीं कर सकता। भाई ऐसा किसी के साथ ना। एक तो मुश्किल से ना मैं वो नीचे उतरा रे पानी से, ठीक है, नीचे उतरा और मेरे को आयरन दिखा और आजू बाजू रेडस्टोन दिखा भाई। ये और मैं आयरन खोदने चालू हो गया, आयरन के ऊपर खड़ा रह गया और गया ना। और नीचे जाके भी एक दिल बचा है मेरा, लेकिन उधर से आया ज़ॉम्बी। स्ट्रीम स्नैपिंग तो चल रही भाई ये लोगों की। मतलब अच्छे से बैठ बजी तेरी। मतलब कोई जीने की गुंजाइश ही नहीं थी मेरे उधर। आर या पा ये बकरी। मैं सोचा अभी मस्त नीचे जाता है, पत्थर जो जुड़ता है और फर्नेस बनाता है मस्त पे की, खाना पकाता है, हेल्प कर, ठीक है। नहीं और नीचे गिर गया भड़वा। जिंदगी में खुशी चाहिए ही नहीं बहन चोर, दुख दे तो भड़वे।
कोने में? ग्रीन। एकदम से क्लाइमेट हरा हरा हो गया रे इधर, पीला हो गया। सौंप हो गया होगा, सौंप होगा भाई। पानी वानी हरा हो गया क्या? मैंगो है लगता है ये। कौन सा फॉरेस्ट है पता नहीं। सौंप होगा ना, सौंप होगा। हरा हो गया, सब हरा हो गया। एवरीवेयर ग्रीन। सौंप रहेगा। अबे एवरीवेयर क्या, पानी हुआ रहेगा ना हरा हरा। नहीं, पानी के बाहर भाई हरा हरा। जीटे खेल रहा है क्या बे? लौड़े के बाल। कौन सा ये फॉरेस्ट? My love, if you treat me right, baby, I'll give you everything. अरे नहीं, माफ करो गुरुजी, माफ करो, माफ करो। अरे आप भी माफ करो भाई, आप भी माफ। अरे लग गई। हाय सही यार। मेरे मन में तो भजवा है, जान में घुसने के लिए। इधर कोई नहीं है, कोई नहीं है। अबे यार मैं तलवार बनाता ही नहीं हूँ। वेरी नाइस। अब भी जस्ट लकड़े का माल मसाला बनाया था मैंने, और ऐसा मर गया ना भाई से, जिंदगी चुप्तड़ हो गई। नई चीज बता बे। बिना कोयले का बत्ती बना सकते हैं क्या? बिना कोयले का बत्ती बना सकते हैं? हो कैसा? स्टेप 1 क्या लगता देखो? दौड़ा। हाय ये बहुत ही ज्यादा सही पकड़ा है। नासा में जा रहा था भाई। हाँ क्या? इसी जवाब के साथ में नासा। अबे दौड़ा तेरा निकालू क्या? हाँ क्या? हाँ क्या? नबे कौन बे? जीबी दे भाई, ये भाई। आइए जीबी आइए। जीबी आई, लेट्स गो। आई ये तेरे भाई का डायमंड स्वॉर्ड का इंतजाम हो गया। हो गया ना? मरना नहीं। मरूंगा बे। ठीक है ना? मैं तो समझा इधर कि तूने डायमंड स्वॉर्ड बनाया, खुद चल बस है। हाँ क्या फेंकूं भाई? फूल फेंको। बे तो कैसे आया? अच्छा मेरे पास ऑलरेडी है। ओके चारकोल से टॉर्च बनेगी क्या रे? खाओ।
अच्छी केव मिली थी, वो अच्छी केव थी भाई, इतनी प्यारी केव थी ना, माल मसाला इतना था ना उसमें। ओरिजिनल माइनक्राफ्ट खरीद और फेदर क्रैल डाउनलोड कर भाई। उससे क्या होगा? उससे देखो लास्ट डेथ लोकेशन दिखेगी। ये थोड़ी चीटिंग नहीं हुई? नहीं तेरे पप्पा की तरह तेरा मिला तेरा तेरे पप्पा। हाँ क्या देख भाई, 2 आर्मर का भी इंतजाम हो गया है, आयरन आर्मर का लेके आ रहा मैं आयरन। It's impossible to get you off my mind. I think about 100 thoughts and you are not enough. हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे कंदम। बड़ा चारा भूखेगा ना। एक गोल्डन एप्पल भी है, सीड फेंको। फेंको नहीं यार, इसमें डाल देता ना। अबे यहाँ पे एक्स, अच्छा मैंने फेंका था। हो गया तेरा भाई तैयार, ठीक है। वाटर अरे डबे इतना ऊपर है ना भाई, इतना ऊपर है ना। वो भी लेके आ रहा हूँ, शार्ड बनाएंगे। बिनोक्लूस जीवा मेरे बंधन 31 है और 21 52 और रुक जा, मैं पहले मेरे को एक आर्मर का नाम दे। नहीं भाई, बच गया भाई, जस्ट बगल में क्रीपर फूटा वे मुंह के अरे पास। बच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में आया रे रंग का राजा तेरी Oh, lava. It's beautiful. But lava is like जान मारो। क्या? उसके बाद जाने आऊंगा। ये लौड़े। अब भी अगर क्या तो हाँ क्या किया ना? मारेगा क्या? जान में हाथ डाल दूंगा। जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुझे पता है कान में हाथ डालने के बाद क्या होता है। देख भाई छोटी आंखें मत बोलना। All I am is a man upon the world. California. अबे हाँ हाँ देव का दबिया
ठीक है भाई। भाई गोल्ड का पर करेंगे क्या यार? अरे भाई गोल्ड जरूरी है भाई। गोल्ड काय के लिए लगता है? वो गधे से ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि सामान दे देता है भाई, कभी कभी वो थूक देता है। आज लेने सही नहीं तेरे था। भाई को क्यों? घोड़ा नहीं मिला, तेरे भाई को गधे मिले। बस जो तेरे मतलब सेम चीज मिल रही है भाई। तेरे को भी गधा मिलेगा। नहीं तू है ना, मेरे को क्या जरूरत है? टाइम क्या हो गया बे? क्या कर रही है? क्या है? हेलो ए चल रहा, मैं जा रहा हूँ। किधर जाना? खाना ना खा रहा और ऑफलाइन जा रहा हूँ। मैं ठीक है। सर्वर ना थोड़ी देर बाद बंद करूंगा, ठीक है? नहीं करते करते मैं तो जा रहा हूँ अपना वो। जा रहा है क्या तू? हाँ। खेलना है तो बता, थोड़ी देर चालू छोड़ सकता हूँ मैं। खाना खाते तब मैं खेलूंगा नहीं। कर दूं? कर दे कर दे। कौन है भाई? अबे हेलो run away, run away, run away, run away. हेलो कौन है भाई? हेलो मैं भी आऊँ। हेलो भाई ये क्या बोल रही है? मेरे को तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही। चल छोड़ बाबा। हो बाय। अरे यार मैं वन पीस नहीं देख पाया, बाद में देखूंगा अब।